we are starting the geography optional. So कैसे हैं आप सब लोग? Waiting for all to join, तो एक मैसेज भी डाल देते ग्रुप पर. Good afternoon, CSE, Anand, Sumit, Khushi, Shubham. I don't know why I'm saying good afternoon. I think probably I wake up at 5 o'clock, तो होते होते अब almost noon लग रहा है. चलिए, and how has been the experience after your test, the GC Leong foundation test, final test? कैसा रहा? जल्दी से वो भी कुछ लिखें. कैसे रहे आपके स्कोर? How was your experience? How has learning been? So people who are new, who have come here, ये भी बताएंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो हमने बेसिक फाउंडेशन किया, क्यों किया, उसकी भी बात करेंगे. What you need to do, that is also there. This is about you considering geography optional. What should you be doing? और आज इंट्रोड्यूस भी करेंगे सब्जेक्ट को. So that is the agenda. आज के एजेंडा में हमारे पास है, we will be talking about world geography, master stroke, not world geography, master stroke geography paper 1 comprehensive course. कुछ पुराने रिजल्ट्स, क्या उन्होंने सीखा, कुछ बुक्स, कुछ रेफरेंस बुक्स, what we should be doing, and apart from that, जो क्लाइमेटोलॉजी कल से शुरू हो जाएगा. कल से we will start climatology. थोड़ा सा I will also prepare you with how the syllabus is to be interpreted, how the books are to be looked at, how can we categorize the syllabus, how have I categorized it, what are the standard books telling us, what is the previous year question, and what are my lecture plans. आज आपके साथ lecture plan भी share किए जाएंगे. Lecture plan will have what will be the key theme of each session, what will be the indicative topic, and what will be the suggested readings. ये सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं. Is everyone okay? तो बहुत सारी चीजें, sir, lot of changes are there after 4 readings, so that's great. Let me put the message. चलिए, तो जब तक लोग ज्वाइन करेंगे कुछ कमेंट्स पढ़ ले. तो ये आपके सामने आ गया. What we are going to do, we are going to talk about the whole lecture plan. क्या है flow of the lecture. So confidence increase. अब लग रहा है कुछ पढ़ा है. So Dushyant, one thing, everyone, I want to tell you with this online thing catching up, it has become that the teacher keeps on talking. और टीचर के पास एक एडवांटेज है to pace up the lectures. He has a slide and he keeps on reading them. So it is a win-win situation for the teacher and the student when it comes to coverage of syllabus. Syllabus तो cover हो जाएगा, guaranteed. But the fact is, learning will not happen. For learning, we will have to have some hard text, जिसको पढ़ना भी होगा, जिस पे टेस्ट भी होगा. So this is what we did in foundation. So Dushyant, ये जो आपको sense of achievement हो रहा है, you are feeling this sense of achievement that now I feel कुछ पढ़ा है. That is surely going to happen when you actually deal with some books, some text. So I will be giving. So you can see in my lecture plans, I will be bringing what will be the book, what chapter you have to read, and class handout. So people who have done foundation, उनके लिए बहुत अच्छा time था. I'm sure confidence भी बढ़ा है. So that's there. People who have just joined in new, and if you're listening to me on the recorded session, first 5 minutes are for students' doubts and queries. So let me take that. Sir, score has increased. Okay, more confident. Rakhi is confident. Dipshika is saying retention is increasing. Okay, very good. That's good. Some of you had given up on your retention. कुछ को ऐसा लगता है. Some of you feel, yeah, I can't remember things. I'm sure I surprised you with your abilities. Yes. Anand is feeling confident. That's a good score, Anand. 80 out of 100 with factual errors. That's what I've been saying. I think Khushi was facing these problems that she was a little losing confidence because she was making errors in fact. But fact wali questions were given just to test you. I hope that won't be eating into your confidence. So I'm glad to read from Khushi also, very confident, but that factual question like terminology of shifting cultivation, I get that. So that you will have to give yourself that benefit of doubt. 5 days lecture in a week. Yes, 5 days lecture week. ये चलेगा. I will just let you know. वैसे तो मैं Saturday भी use करना चाहता हूँ. I want to finish this thing much before prelims. Paper 1 should be done before prelims. Paper 2 will come after prelims. Get that? A lot of changes are there for reading. Gain more confidence. Got 78. Good, Sanjay. That's really good. Harsh says some things that I have done only 5 classes from foundation. I'll be watching the recorded. So all the students who are joining in today, please understand that we are starting a fresh batch. Everything will be taught to you. But students who have spent some time with the subject through a course called foundation course, they would be in a position of comfort. They would be in a position of better comprehension of the course. So Harsh, I am glad that you've done 5 sessions and you plan to do them. You have few days in this coming week. No, you can do that. बिल्कुल हो सकता है. Preparation के according सही था, but score was 52. So Priyanka need to brace up. Get that? And some people are saying fact part was lacking. I have a request. Please do not hate facts. Everyone, you want to clear this examination. How is your answer going to be different from other one's answer? If you are able to quote a case study, if you are able to quote a fact, you will make a huge difference. So I'm not about blind collection of facts, but you should have a mindful connection of some facts, which I will help you in. Don't worry, the course is designed in a way that we will offer you that also. So I've not done foundation, but have studied geography for GS. Okay, Preeti, very good. So I'm glad that you've done something in the GS. I would say, Preeti, foundation कर लीजिए. Those lectures अपने time पे करिए. One at a time. You can keep the speed 1.5x. That will help you. Okay, Dushyant got a good score. Ravi, Prakash, welcome. This is your first class. I understand. I will be giving you the overview, how things will go about with this. Nilni is doing 72. That's a good score, Nilni. Saurabh, sir, but बहुत answer में जैसे optional में थोड़ी confusion है, वो clear नहीं हुई. Saurabh. So everyone, I just want to bring a thing to you. Everyone, I want to bring a thing to you. And whether you've done foundation course or you are joining in today. So I have a question to everyone. So do you know my Telegram channel? Do you know this Telegram channel? Sorry, I have not put it in there. If you are not joined in into this, please join in. Sachin Sir Official, not a very fancy name. Sachin Sir Official. Get that?
So this is what I have, and I have pinned it also on top. If it is coming, is it coming? So let me check. Did the telegram come? Okay, let me write it again. I think now it has come, and I'm pinning it on top. Now everyone, please tell me one thing. ये थोड़ा सा मुझे अभी एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में. This is an English medium batch, so I will be talking mostly in English. If there is something Hindi coming in, then it will be inconsequential, but you can definitely ask me. Pinaki is saying what is foundation course, वो भी बता. Everything I'm telling you. ठीक है? So सौरभ ने कहा कुछ factual गलत हुआ and something like that. I can see people are joining in the group. Now everyone, what is happening on the group? Do you see every hour I'm posting a question? Every hour I am posting a question, and students are answering that question. So now somebody says, and this boy has been sending me answers. So this boy has been on this group for quite some time. He says, these quizzes are being held where? Can anyone explain this format in layman terms? So now let me give you the instruction. Hourly quiz in Learn with the Master series at Sachin Sir Official, daily questions 7 a.m. to 10 p.m. Is that instruction clear? Yes. Still the student wants to write, can anyone explain this format in layman terms? Now everyone, I want to tell you want to clear the examination, हर चीज को layman term मत बनाओ. उसमें लिखा है हर घंटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, answer this. That's all. That is a quiz. That's all. Please explain in layman terms. This student has been sending me answers. I keep on running answer writing sessions, so he's not new. So you can think so absolutely new. Maybe he doesn't know Telegram and all that. No. Last year he's been sending me answers. So please get that. Do not underestimate yourself. You want to clear this examination, do not consider yourself just fresh born. So I'm a beginner, abhi taza, pink, I have been born. That's not true. So don't do that. So you can see that. So there is someone who's putting question every hour and you are saying, please explain in layman terms. So that is what I want to say. Saurabh sir, factual mein thoda issue hai. Please start working on that. Get that? Sir, pure optional में last 10 minutes के लिए हर एक क्लास के raise hand करवा दिया करें. So Nilini is saying, sir, in optional classes can we have raise hands? So I have a suggestion. Please type in your doubts, and if something is concerning the whole batch, I will definitely do the raise hand. Pinaki is saying, what is foundation course? So everyone, let me first talk about this course. So when we come to geography optional, I have seen when I start training students into geography optional, I find that many students have joined the geography optional because their friends were doing it. They heard from someone, or probably they have science background, engineering or other subjects, which their own subject they find difficult, but they heard that geography is scientific, so they joined it. It so happens it's a very, very normal thing that it will happen. So when we start telling them, and when we say that the water evaporates and the air starts rising up and the temperature falls, that is called lapse rate, the same engineering student who has spent 5 years in the engineering college suddenly says that I don't understand air is rising, which is not correct. Everybody knows that, air will start rising. But as you can see, like on a Telegram post, you will say, please explain like layman. So now you would want air is rising, please explain me. So the answer is air is light, hot air. It has expanded relative to the surrounding air. This air parcel starts rising. Oh, sir, I understood it. But then what will happen is this will unnecessarily slow down the main course. So what we do is that in the foundation, we introduce you to certain very basic things, certain vocabulary of the subject. And I also want to tell you that it becomes very easy to teach geography to students who like their subject. People who have joined it just because others were saying, so they may not be able to do great in geography, in any optional for that matter. So this is also the time to like your subject. What is its strength? What is its weakness? So that is what Pinaki is, our foundation course. This course was conducted for 15 lectures before in the last month, in the month of February. You can watch those lectures. Those lectures are very, very basic. Those lectures are about NCERT. Those lectures are also about foundation, also gives you some tools about drawing maps. So that all will help you. Okay, that if you have other questions, you can raise hand also. I will be answering all questions today. This is the course orientation class, and what is my design, that will also come. So continuing with that, Gaurav, after reading NCERT first time, picture cleared. Now come to know that what, where, why, how, when the things are. Now time to boost. Very good, Gaurav. Thank you for this. So Pinaki, I hope you can understand from a comment coming from a student who has just completed the foundation. In foundation, I choose 2 books. One is NCERT, other is GC Leong. And I make the students work the way you can see on the planner right now. In the classes also, I will be doing this. I will be telling you which chapter to do, when to do, class handouts will be there. So students also get to know my style of teaching. Students also get to know that their way, where all is it inefficient. I also train my student how to read. So GC Leong reading techniques were given so that they were able to finish a book in shorter time with greater retention. At the end of that, we even conducted tests, and with progressive tests, students could see their scores are increasing, their confidence is increasing. So those things, those tools, those tips, those techniques have been given in the foundation, Pinaki. If you feel, I have not done it, then how will I manage this? So Pinaki, I'm saying that is a course which is a supplementary booster course. If you've not done this, you can start doing it from today itself. Watch those lectures at 1.5x. Get that? And please do the associated exercises. That is what will help you. Okay, thank you Gaurav for sharing. अच्छा लगा, आप confident हो रहे हैं. Okay, so raise hand अगर आपको कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं. So Pinaki, I have explained to you, sir, 3 times reading करने से के बाद 60% आया, तो 10 to 15 times के बाद मुझे लगता है actual part भी अच्छे से कर पाऊंगा. Thank you, sir. So Dhananjay has asked the question. He's written the question in Hindi, so I'll tell you what he meant. So in the foundation, we did 3 times reading. Okay.
And Dhananjay is saying that I was able to score much 60% plus. But if I do 15 readings, then so amazing things can happen. So everyone, please do not compare with others. I personally feel for me 3 readings are enough to get a very high score. Many of you would agree with me. But as I said, every learner is unique, every learner is different, so is Dhananjay. So after 3 readings, he feels that I need more. Dhananjay, I want to advise you won't need till 15. I think 3 are good enough. If you are a slow learner or if you want to go with things, for a more longer term, it can be 5 times. Now, some of you might find it very ridiculous. Some of you might find it, okay, this teacher, no, he's talking about 5 times reading. Who has the time? So maybe you were not present in the foundation. The first time we read, we gave 8 hours. Second time we read, we gave 6 hours. And third time was also 6 to 5. So actually 3 readings have only taken around 24 hours. So don't think the 3 reading means, 3 weeks and all that. In 24 hours, 24 effective hours, students have read the book 3 times. So those techniques are there if you have missed that. So that will help you. Sir, should I watch foundation course first to continue with this? No, Abhishek, you can continue watching it simultaneously. You don't have to be, it is not a series connection that one will follow the other. You can have a parallel connection. So Sandhya also has the same doubt. I hope you get that. I'm sorry, Pinaki, I took some time scrolling down. I hope you got your answer. And Pinaki, Sandhya, and Abhishek, if you have got your answer, please confirm that yes, sir, that answer is done. Vijay is saying, I'm doing your foundation course. I've completed 10 lectures and now I'm starting with the course and parallelly. Yes, absolutely, Vijay, you are on the right track. बिल्कुल ठीक जा रहे. Okay, एक कुछ hand raise आए हैं. People have, who is this? Harsh has raised hand. So Harsh का एक question ले ले. So why should I only talk? Harsh का भी एक question ले लेते. And you can also ask questions in between. Okay, Harsh. Good morning, sir. Good morning, Harsh. How are you? Sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, I'm very glad that I got an opportunity to talk to you. Yes, please. Thanks ask a lot. The question. Sir, I posted a question sometime before. Sir, I asked that I have done 5 lectures from the foundation batch. Okay. So can I continue these classes and watch that recording side by side? Perfect. So Harsh, I think I answered this question just now, that this is not a series connection, that one will follow the other. You've already done some lectures, that is good. You can continue it simultaneously. I would say use the weekend. Sunday go, probably you can watch 2 lectures. Get that? And Okay, watch them 1.5x, it will help you. Okay. I think Thank you very much, sir. That. So that helps you with your query, and all others who had asked the similar queries. Thank you for this question. Sir, my GC Leong not completed and I not completed foundation. So this guilt, bilkul ye sahi hai. This guilt not able to complete lecture, test, sir, and 1 hour strategy. Okay, everyone. Guilt is a big killer, yaar. Guilt ka kuch nahi kar sakte. Yes or no? Guilt is a very, very big killer. So how many of you have guilt? आज उसका भी solution कुछ कर देते जब नहीं हो पाता है. So let's be human. जो छूट गया अभी छूट गया. Be with me. ठीक है? Don't worry on that. Guilt छोड़ेंगे प्रियांशु. This is Shivangi saying 2 times reading with self approach 55, not only, but reading with your approach gave me more confidence. Okay, good. So I'm scrolling down. Sir, PYQ 2019-2020 question, I was able to do 5 out of 7. Is it good? Oh, very good. 5 out of 7. And I'm to saying in geography, if your geography is your optional, you can actually do much more. So PYQ के लिए paper download किए हैं. Sir, PYQ topic wise मिल सकते हैं क्या? Priyanka? Every topic when we start, we will be giving you these PYQs topic wise. जैसे ये है, so आपके पास आएंगे, and they are used in the class also. So एक साथ नहीं दे रहा हूँ. As I said, I am a teacher with a different approach. So I want the student to take only that much that he or she can chew. ज़्यादा मुंह में खाना भर लेंगे गिर जाएगा, ठीक है? So Priyanka, that will be given to you. PYQ इस तरह से मिलेंगे. Okay, Megha, your score is good. Sir, college exam के चलते foundation full नहीं कर पाया NMB, please complete it. I know you joined it, बीच में छूट गया. Bring in that integrity. The class duration 2.5 hours or 3 hours. Okay, 2.5 hours. Optional classes are 2.5 hours. Everyone. प्रशांत, इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाती. प्रशांत ठीक है, वो भी बात करते हैं. इंटेग्रिटी क्या होती है और मेंटेन नहीं हो पाती. Is everyone, are the doubts clear? So in between some people had asked, so I have taken the doubt also. अगर अभी किसी का रह गया हो तो you can ask by raise hand also. So are we going to cover the current issues, government policies and legislation related to our syllabus? Okay, everyone. Good question. ये आया है, गौरव का question आया है. So everyone, just to give Gaurav's answer. Climatology syllabus is this. Actual syllabus is this from UPSC. Get that? I break it down into elementary topics, conceptual topics, and applied topics. The third one, can you see global climate change and the role and response of man in climate changes? Last week, if you were reading Hindu newspaper, was it covering the IPCC report on how climate change is going to impact Indian coastal cities? Get that? So Gaurav, we should not be looking at the preparation for the exam from this approach. Sir, are we going to read government policy, legislation? This is Lucent Way or Ghatna Chakra. There is a popular book called Ghatna Chakra in UPPCS. Student mug it up. So Gaurav, this is an invitation to go beyond that. PCS वगैरह में ये government report रखनी पड़ती है. But यहाँ पर, if India has INDC, Intended National Determined Contributions in Climate Change, where renewable energy पर हमारी सरकार ये काम कर रही है, वो यहाँ पर आएगी, बिल्कुल आएगी. But if you are thinking government policy, legislation रट लेते हैं. So I have one topic which I am starting, इसलिए मैंने आपको sample दिया. Every topic, wherever it is relevant, that will happen, Gaurav. And I also want to tell you, okay, alarm for the question has come, so I have to give the question also. चलिए, question भी डालेंगे. Okay. हाँ जी.
को भी आंसर मिल गया होगा. I want to keep on scrolling also because many things are coming. Urmi saying sir please थोड़ा हिंदी में भी बोलिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे. Okay, do that. Urmi, though this course is English, अगर आपको कुछ हिंदी में चाहिए तो आप मुझे वहां पर हैंड रेज और डाउट भी रेज कर सकते हैं. ठीक है. Gaurav says actually I saw some PYQs related to that is why I asked. So Gaurav का question, Gaurav has seen some PYQs. I'm very glad that Gaurav has done that. And Gaurav, since you've done that, so I want to tell you, ये PYQ paper 2 का था कि नहीं? Mostly paper 2 में, paper 2. I'm doing paper 1. Paper 2 questions are many questions which are directly picked up from CAPES. Yes. So Gaurav, I understand your concern. It's a very valid concern, and that will be done. ये तो हमने कहा पेपर 1 में भी कर देंगे हम पेपर 1 में भी कंटेम्प्रेरी कर देंगे तो उसमें भी हो जाए. ठीक है. So now everyone, I have a question. अब आपने बहुत कुछ बता दिया और ये हमारे जो है टॉपर्स हैं इस बार 2020 में. आयुषी जैन, शी इज इन IPS नाउ. एकेडमी में ये लोग आ गए मेरे ख्याल से. इनका द ट्रिप इज ओवर जो हिमालयन ट्रैक होता है. So she is the top scorer this year. So master stroke program में she was a part of that. Ajay Jain has been one of the top scorers of geographies in IS now. पिछले 3 attempts से Ajay Jain, Omkant Thakur, they were clearing. Even Abhishek cleared 2-3 times. Saurabh Pandey. So 2019 these were the toppers with geography optional, and they have been my students and long association with students. 2-3 साल तक इन्होंने अपने rank भी improve किए. They improved their ranks also and they cleared also. Rishabh CA, he is in Tamil Nadu. Priyanka Shukla is Madhya Pradesh IPS. Gaurav Singh, you would have heard of BPSC topper this year. Naveen Reddy was 2019 Indian Forest Service topper. Indian Forest Service rank 1. So I have a question. Question का आंसर करेंगे everyone. I have spoken a lot. एक question है सबके लिए. Don't type it. Don't type it. I want my students to think. Why? Okay, this one seems to be a little slow. Now it is working. Why are you joining or doing this course? Don't be in a hurry. Don't be in a hurry. 2 minutes and then only type. Type after 2 minutes. Think about it and then tell me why. There can be more than one reason. Okay, now you can type in. I can see the comments coming in. Quickly, everyone to type in. अगर आप आए हैं तो some of you would have just come out of curiosity. मैंने सुना है geography he teaches and I wanted to see what he's teaching. That's why I've come. It's absolutely okay. All things are okay. I want you to write that. Why are you here? Okay. Thank you for writing. So your answer should be my side is to use optional subject as a vehicle to top ranks. That is possible only when you target 300. Whether 300 will be given that year or not, that's a different story. Whether 300 would be given or not, that's a very different story. Yes or no? क्यों बात कर रहा हूं? आपने सब कुछ लिखा. Ayushi Jain, she cleared in her second attempt. She got IPS. She wrote 2021 also. She is 2020 top scorer. She wrote 2021 also. She could not clear prelims. So now she's in the academy. She said, sir, I could not clear it. That is why I'm here. Get that? Ajay Jain gave the attempt 3 times. He cleared all 3 times. I remember him. He used to come, he was in the Indian Railways. When he cleared for the first time, he used to come for Saturday, Sunday for the tests. So he said, sir, वो railways में है तो उस time में sir only we are on touring then. Second time he became IPS. And third time he became IAS. Omkant Thakur, I remember, like he was in Indian foreign trade. He's from Bihar. And he said when the result came, sir, जब मेरा result आया तो in the newspaper it was written, बिहार का लड़का IAS. Sir, IAS तो मुझे मिला ही नहीं. I really want the newspaper report to be really true. So I have cleared the exam, but I did not get IAS.
So he wrote the exam again. And I want to tell you, he was from a background with not very strong English. तो अभी किसी ने मुझसे कहा, उर्मी ने कहा सर हिंदी में भी कुछ बोलिएगा. Yes, Harsh is saying sir I saw his interview. बहुत बढ़िया. आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मतलब very down to earth, एकदम grounded लोग. Absolutely grounded. Yes. So that's what I'm saying, that if you are joining this course, make it a vehicle. Saurabh Pandey, 6th attempt. सोचिए बड़ा तगड़ा combination है. 6th attempt last, I would say, and rank 66. Abhishek Kumar, he was from IIT. He was working with Jamshedpur Tata Steel plant में काम कर रहे थे. पहले attempt में he became IRS. इनका rank ही कुछ ऐसा है 150 something. First attempt में he got 150 something. सर आप इन टॉपर को भी डांटे होंगे. यस, अजय जैन का कभी मेरे साथ इन तीनों के साथ मेरे ख्याल से मैंने एक रिजल्ट के नेक्स्ट डे नो वी सैट ऑन एन ओपन चैट. सो अजय ने कहा कि सर वो डांट बहुत काम आई, because you really hold us to account when we make our mistakes. So everyone जो भी यहाँ पर कुछ error होता है, we have really brought it out. Priyanka Shukla was amazing. मुझे याद है the way she used to write, her preparation was low. And किसी कोचिंग में कहा कि हमारे नोट्स रट लीजिए 350 आते हैं. So when Priyanka cleared the examination, she scored above 300. She came to talk to the students. She said यार ऐसा भी बताते हैं कि 350 आते हैं, मैं चली गई थी वहाँ पर. Now I got to know कि 350 तो आता ही नहीं है. So that is that. True. So that's what we are talking about. So why everyone run for IAS and left IPS, IFS? सर क्या IAS में ज़्यादा advantage है? Sarveshwar, every job has a different profile. Every job has a different profile. I think policing job, uniform job, some people have craze for it, that I want a uniform job. Say, for example, Priyanka Shukla, I want to tell you, since you've asked me, and because these students have really worked with me and I have known them in their interview, you get to know them more. First is when they are writing their answers and when they're coming to learn geography, you know them as a student. But when they clear their mains also, when they come for interview and then they say, sir, please guide me, then you get to know more about them. So Priyanka, when she got 109, I said, okay, Priyanka, next attempt, let's prepare. She said, I'm good. I said, Priyanka, you're good, but I think IAS is on for you. She said, no, sir, I think her grandfather was in the police. She said, I have always liked the police job and I really wanted to do that. So that is Priyanka Shukla. She's very happy with an IPS officer. I had this student, Malika Sudhir. Her father was in Delhi police. And everybody thought that she will be joining police. But her preference was always foreign services. And she's in the foreign services now. So your father is in police and you know that policing job very well. And you feel that this is not what I'm cut out for. So you'll think otherwise. Some family member was in police and you really were inspired by that and the policing job and the challenges associated with that, you will be going for that. So this is more about the decision, Sarveshwar, is more about knowing what the job is. So जब आप उस job को समझते हैं, then you look at what is this job cut out for me. I think Indian Foreign Services is a very a job which is totally secluded. वो एकदम अलग कर देता है आपको, एक embassy में भेज देता है, country में रहता है. But then it is a lot of growth for you. And you need to have your PR skills where you are representing the country. Now you are a person who doesn't have those abilities, अपनी बहुत सारी abilities है नहीं, उसमें आप confident नहीं हो, you are very introvert, then you might not think that IFS works for me. Some of you would never want to go abroad and stay and work for India. So that is there. सबका अपना individual criteria है, job के बहुत सारे different issues हैं. So that is there. So just one drawback in IPS is that it is under state, and state ruling party treats them as their own condition, and lesser dignity and resources allotted in some states. Harsh, I want to tell you, I have students who have left IAS also. I have students who have left IAS. This boy from Tamil Nadu cadre, he resigned Tamil Nadu cadre, and he said, and he had corporate work, he had work experience for 5 years before that, and when he came to IAS, after 3 years he said, sir, मुझे मजा नहीं आ रहा. I really said, is it a thought of choice? He said, my family, my friends, everyone is saying, do not leave, but I'm not challenged, sir. मुझे नहीं समझ में आ रहा. So I again cannot reveal what all conversation, whatever ideas were there. So let us not say that IPS is any less, or IPS has any less power. Try being Uttar Pradesh police. You have so much power. But yes, political interference is there in the work of IAS also, IPS also. So that is, you need to understand that is there. Achha, tell me one thing. Online class, non-serious students coming to the class, और बीच में कुछ भी comment करके, if the student leaves, that is the problem which an online teacher faces. Is that problem with an IPS officer? No, that is my problem. Yes or no? Somebody, अभी किसी ने ग्रुप पर डाला, is this only for optional student? वो जो अभी ग्रुप पर डाला हुआ है कि there is this orientation, उसमें लिखा geography optional English. The student is asking कि sir, is this only for optional or GS also? So that's what we are talking about. कि भाई ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज है ना, वहां पर लिखा हुआ है, will you read it or not? अभी IPS को प्रॉब्लम है. IPS को प्रॉब्लम क्या है? IPS को प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर. एंड टेल मी वेयर आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. इफ somebody wants to disrupt law and order, किस टाइम पे करेगा? दिवाली पे करेगा, न्यू ईयर पे करेगा. So all those occasions where which are special to your family and all those festivals, that is the time where you have to be more vigilant as an IPS officer and as an IAS officer also. Yes or no? And I also want to tell you, everyone who's listening to me, please understand, in government job बहुत सारे संसाधनों की कमी रहती है. In government job there is a huge bureaucratic procedure to get many things passed. So you will be person operating with less than required resources, less than required workforce. The challenge lies, कौन उसमें बढ़िया काम करता है. भारत में प्रशासन बहुत बड़ी चुनौती है. So administration in India is a huge challenge. So one thing I can guarantee you, IAS, IPS, IFS, lifelong unimaginable challenges. So if you're a person who likes lifelong unimaginable challenges, that's okay. And you're like, no, sir, I want एकदम ठंड की जिंदगी. Indian Postal Service, है ना? Indian Postal Service बढ़िया. So
पोस्टल सर्विस में मोदी जी ने कहा पोस्टल इज कमिंग इनटू बैंकिंग आल्सो, बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ डाइवर्सिफिकेशन यू कैन डू. पोस्टल सर्विसेज थ्रू कम्युनिकेशन आल्सो, दैट्स आल्सो देयर. Yes. Siddharth is saying huge responsibility, 24/7 job. Absolutely. I would say that there are many bureaucrats whose kids don't want to join the service because they have looked at the job, which is very demanding. So not that those kids are any less, but sometimes you feel that I am okay with like being a musician. मुझे अपना rock band बजाना है और मुझे एक गाना बनाना है. Possible? Yes, sir. I don't want to take care of law and order all the time in my district like my father does. True. So you can do that. I want to paint. I want to sing. I want to probably write a book. Yes. I want to be a scientist. COVID. I want to find a cure to that. Yes, I want to be a PR manager. I want to be a sports person. Absolutely okay. And I also want to tell you that in private sector, things move very fast. Things move very fast. So sometimes they've seen, in public sector, their parents are finding, like things are not moving very fast. They have to operate very, very patiently. So some people opt for private sector also. And I've always maintained that, like people say that IS is the last thing. I'm saying, why not Ambani? What's stopping you from being that? Is Ambani doing less to nation building? So a private capitalist also does a lot of that. So अगर IS चूज करे किया है तो बट रैंक नहीं है उतनी, दूसरी पोस्ट मिल सकती है IPS IFS. Sandhya, it's all the game of rank. That is why I said these people, the screen which you are seeing, these people had given multiple attempts. They had given multiple attempts to be the topper because their scores were not coming to your single goal should be that I have to get 300 plus in this, and I want to tell you to get that 300 plus, first thing is you should be interested in the subject. You should have tools and techniques to optimize the subject, and in the end you should develop absolute comfort with the subject. और उसमें आपका साथी बनता है आपका टीचर. Your mentor is your teacher, who is your partner in this, partner in crime, can I say that? And what kind of partnership? 50-50. I've always maintained 100-100 partnership. So if you don't like your partner, life partner पसंद नहीं आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. The marriage goes into a divorce. Yes, the marriage becomes very fractured. So this is the time you're looking at your partner. अच्छा इसके साथ करना है, ज्योग्राफी ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं. आई डोंट माइंड इट ऑल. भाई आई विल बी वेरी डिमांडिंग. आई एम सेइंग राइट इन द बिगिनिंग, कैन आई डिमांड फ्रॉम यू? बेटा ग्रो करना है बिकॉज माय टारगेट इज 300 प्लस. व्हेन आई टॉक टू दीस पीपल, जब मैं इनसे बात करता हूं, ये बच्चे कहते हैं कि सर अगर उस टाइम का जोश ना आज नहीं दिखता है हमें, बट वो जोश पता नहीं कहां से आप फूंक देते थे. कैसे ना? The DM Noida got chance to contribute to nation in Olympic. मैंने कहा बहुत सारे चांस है. Even after becoming a civil servant, you can contribute multiple things, not only just administration. Get it? Two things should be chosen carefully: job and life partner. Yes, Sonam, बिल्कुल ठीक है. नौकरी और छोकरी for a boy, लड़की के लिए छोकरा भी हो सकता है. नौकरी and छोकरी are the vehicle, and I want to tell you, you and I are here partnering what? Next 30 years of नौकरी, next 30 years of your career. That's why we are here. So मुझे लगता है कि वो 30 years कहाँ हो सकते हैं? They can be in IAS. They can be, if not IAS, then allied services like Indian Postal Service, or they can be, I could not clear it, I just attempted, so that is that. And I'm very sure जिन लोगों ने foundation भी किया होगा, the way we completed the books, that would help you in many things. So is everyone okay with the first question which I had for you today? That what should be your target? मैंने कहा ना, this is course orientation, what is your expectation? So how many times can we give the attempt without joining it, or we have to join it as of starting? So Dubey has a question which is not related to geography, but about the exam. So first of all, your attempts, your number of attempts are 6. Yeah, if you are general category, number of attempts are 6. I think they are allowing till 32 now, but I do believe that in the coming time the age should come below 30. So if some of you are thinking of doing it after 4 years, maybe like after some of you are just in your first year of graduation engineering and you're thinking that I'll do that, so online you join the classes. So I would say it might come down. So 30 के नीचे ही रखिए आप. अब आता है how many times can we give the attempt without joining it? So once you clear, now you have to join it. Now you have to join it on that service. But if you have cleared IAS and IFS, you cannot give it again. फिर तो आपको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, वो दोबारा नहीं दे सकते. एक बार हो गया तो हो गया. The job is over. Now if you are an IRS, suppose as you said, sir, how many attempts can I give without joining it? So when you are an IRS, so you need not join IRS immediately. You can apply for a technical leave for 1 year. So without joining, you can do that also. So one attempt without that is allowed. But after that 1 year, you will have to join it. You will have to join it. And I want to tell you, whichever service you join, immediately you don't work as an officer over there. You also have your training. As I told you about Ajay Jain, Om Kant, these people were, in their trainings. They would come to Delhi, meet me and all that. So please don't consider that if you clear the examination and you not become IAS, so you will be stuck with a particular job. तो वो भी training time होता है, easy होता है, आप manage कर सकते हैं. Do we get that? तो ये आपका, I hope that answers your question. तो मैं चाहूंगा आप earliest at your first attempt itself try and do that, and it is very much possible. I have had students तो first attempt में ही rank लेकर आए. चलिए आगे आ जाए. किताबें, most of you hate it. 3 किताबें, चौथी किताब, 4th book and 5th book. इसमें many people keep creating tension, तो मैंने कहा यार why fight with it. So people who were doing foundation with me, foundation में हमने कौन सी बुक की है? क्लास 6 to 10th plus GCA.
6th to 10th was done by student way. And for GC Leong, I mentored you. Now tell me today, honestly बताइए, where are you more confident? GC Leong or your way? 6 to 10th, अरे हाँ वो भी तो किया था सर, वो तो खुद से किया था. Paper also were going bad. आपके फाउंडेशन कोर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल को आसान बना दिया है, इससे ज्योग्राफी जीएस कंप्लीट, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके सिद्धार्थ, अमेजिंग. So everyone is saying, sir, GC Leong ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूं मैं. Why? Because you did your own way. I wanted in foundation, I want to be, democratic, that you do your way. आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए. इनफैक्ट 1 to 15 also, as Dolly is rightly mentioning, वो भी आपने अपनी तरह से किए थे. 15 से 25 में मैंने कहा आग बढ़ाते. ये सुनो. So 6 to 10th and 1 to 14, I was being United Nations. Get that? But 15 to 25 पकड़ के एकदम जो है आप लोगों को पकड़ लिया. You may not, some of you may not have liked me for that. कि अरे यार ये क्या है, मेरे को बोल रहा है बुक पढ़नी है, इतने टाइम में पढ़नी है, आई वांट टू डू इट माय वेज. आई एम नॉट नो वे सेइंग पुतिन डिड एनीथिंग करेक्ट, बट आई वाज यूजिंग फोर्स. यस सर, मेरे पास सविंदर सिंह की बुक है शुभम, सविंदर सिंह की बुक है शुभम, तो बड़ी अच्छी बात है. मेरे पास माँ है, सुनो, आपने लिख दिया मेरे पास सविंदर सिंह की बुक है, मेरे पास माँ है अभी नहीं, मेरे पास तो बीवी भी है, मेरे पास तो बच्चा भी है, और मेरे पास तो सविंदर सिंह की सारी प्रकाशक देके जाता है. द बुक सेलर कम्स टू मी, सर ये बुक है, इसका रिव्यू करिए सर, अपने बच्चों को बताइए. मेरे पास बहुत सारी बुक है. So that doesn't change anything. So please don't feel, अब किसी को लगा मेरा मजाक उड़ा दिया है भैया, क्वेश्चन ऐसा था, आई कुडंट होल्ड इट यार. मैं उसका यही आंसर था, आपने कहा मेरे पास सविंदर सिंह है, मेरे पास माँ है यार. सो आई नो व्हाई यू आस्क्ड द क्वेश्चन. सर मेरे पास सविंदर सिंह है तो ये लूं या ना लूं? भाई इसको लिखा है मस्ट बाय, इसके सविंदर सिंह से कुछ नहीं होता है. गेट ऑन? तो ये चीजें आपके लिए मस्ट बाय हैं. इफ यू आर ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड कि सर ने मेरा मजाक उड़ा दिया. आपने जो लिखा, मेरे अंदर से भावनाएं आई कि मैं ये जवाब दूं कि मेरे पास माँ है. ठीक है, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. ओके, उर्मी सिंह सर, हिंदी में है क्या ये पीली वाली बुक्स? पीली वाली बुक्स जो है, पीली किताब ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है. ओके, दीज आर कॉल्ड ज्योग्राफी मेड सिंपल सीरीज बाय रूपा पब्लिकेशन. उर्मी सिंह सर, मुझे क्या लेना होगा फिर भी बताओ. उर्मी, आपको नहीं लेना होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा. और यहाँ पे किसी ने कहा सर मेरे पास सविंदर सिंह है, तो आपको सविंदर सिंह से मैनेज करना पड़ेगा, विच इज अ वो रिप्लेसमेंट होता है. ये रूपा पब्लिकेशन है, ये जो लोगो है रूपा वालों का है, रूपा पब्लिकेशन. दिस इज पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी. सो अभी क्या करना है फॉर दिस कोर्स, दिस ओनली. अभी ये नहीं लेना है, दिस इज फॉर अभी मैं थोड़े टाइम में बता दूंगा. दिस इज फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. दिस विल बी इन द आई वुड से इन द मंथ ऑफ, अभी क्या चल रहा है, मार्च आ गया ना, मई में लेंगे. विल बाइट इन मई. ठीक है. ओके, अदर क्वेश्चन सर. फॉर फर्स्ट पेपर वी मस्ट बाय बोथ रूपा. यस संध्या, सी बेटा, physical and human geography, no, both these books are only for paper 1. They are for paper 1 only, not for paper 2. They are for paper 1 only. Sonam is saying edition, whichever you get बच्चे, whichever you get. जो भी नेट पे अवेलेबल है, कोई नया पुराना इसमें कुछ नहीं. ये एनसीईआरटी है, क्लास 11 पार्ट 1. इज एवरीवन क्लियर? इसमें मैं एम्बिग्विटी नहीं चाहता हूं. कौन सी डिक्शनरी सर? पेंगुइन डिक्शनरी. सर सॉफ्ट कॉपी लेनी है, हार्ड कॉपी? सो ऑनेस्टली टेल मी व्हिच बुक्स यू रियली रेड. अब तो सॉफ्ट कॉपी भी आ रही है ना. कौन सी बुक सच में यार पकड़ के आप करते हैं एंड यू गेन कॉन्फिडेंस? हार्ड कॉपी मंगा लो. डन. इतना इन्वेस्टमेंट आपने कोर्स में किया है, कैन यू डू दिस आल्सो? सविंदर सिंह का क्या करना है वो भी बताता हूं. आई सेड टुडेस क्लास इज ऑल अबाउट व्हाट शुड बी योर टारगेट. सर माय टारगेट इज 300 प्लस. इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफी, व्हाट शुड आई डू? मुझे थोड़ा सा अपना फाउंडेशन करना चाहिए. एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट आर द रीडिंग टेक्निक्स एंड ऑल दैट, वो भी वहां पर दिया जा चुका है. ठीक है. सो बोथ पेपर 1 एंड 2 किस मंथ तक एंड हो जाएंगे? So beta paper 1 will end before prelims, paper 2 will start after prelims, and I do plan to take it till September. उतना तो टाइम लगता है. ठीक है. उसमें भी अराउंड इतने ही लेक्चर्स होंगे, 70 के करीब लेक्चर्स होते हैं. वी आर गेटिंग 20-25 डेज अ मंथ. कुछ अगर डबल भी कर लेंगे तो 3 मंथ्स तो लगेगा उसमें. ठीक है. ओके, will it be good? Harsh, I did not get your question बच्चे. I have Oxford. हाँ, if you have Oxford dictionary, even that's okay. Penguin या Oxford लिख रहा हूँ. सेम फॉर एटलस. एटलस में भी मैंने नाम क्यों नहीं दिया? व्हाई डिड आई नॉट गिव अ पिक्चर? ओरिएंट ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड, whichever you have. ठीक है. सो आई होप एवरीबडी गॉट द क्वेरी सॉल्व्ड. इफ यू हैव बोथ, वेरी गुड. मेगा सर, जीसी लियोंग कंसेक्यूटिव 3 डेज कैसे करें इन वीकेंड, बिकॉज इफ गैप हैपेंस वो न्यू लगता है. सो प्रियांशु, एवरीवन हु इज गोइंग टू डू फाउंडेशन नाउ, प्लीज डोंट डू द रीडिंग वाला टारगेट. That was available and optional available to those people जिन्होंने फाउंडेशन पूरा 1 महीने में किया. एंड आई होप दे कैन अंडरस्टैंड कि यार फाउंडेशन ने हमें सच में आज ज्योग्राफी के लिए कॉन्फिडेंट भी किया है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मास्टरिंग इट, और इसमें हम कंटेंट भी, हम आंसर भी लिखना चाहते हैं. सो प्रियांशु, ये जल्दी में नहीं हो सकता बच्चे को. सो दैट वाज समथिंग वेयर वी हैड दैट. सो यू जस्ट डू व्हाटएवर यू कैन एज पर द फॉलोज. आप वो रीडिंग टारगेट्स नहीं लेंगे. ठीक है. इसलिए हम वो टेस्ट भी यहाँ नहीं डाल रहे. टेस्ट भी उसी कोर्स में डले हुए. पीपल हु डोंट नो अबाउट द कोर्स, दैट इज कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक बिगिनर्स ज्योग्राफी कोर्स. किसी के पास अगर लिंक है तो उसे प्लीज शेयर कर दीजिएगा. सर ऑक्सफोर्ड में आई ट्राइड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ बे एंड गल्फ. ऐसा है क्या? होना तो नहीं चाहिए. बे एंड गल्फ आर वेरी बेसिक टर्म्स, होना चाहिए.
अब आ जाते हैं इस पर। सर मेरे पास सविंदर सिंह है, मेरे पास माजिद हुसैन भी है, मेरे पास डीआर कुल्लर भी है, मेरे पास आरडी दीक्षित भी है। अंकिता इज सेइंग फॉर ओल्ड स्टूडेंट हाउ शुड आई अप्रोच। अंकिता व्हाट डू यू वांट टू नो स्पेसिफिकली बताओ बच्चे, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो एवरीवन पे अटेंशन। डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज अ डिक्शनरी इन योर ग्रोइंग ईयर्स। डिक्शनरी, घर में एक डिक्शनरी है, ओनली यू यूज इट और समटाइम्स योर पेरेंट्स योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव आल्सो यूज्ड इट, बाकी लोग भी यूज करते हैं, एवरीवन। ओके, डिक्शनरीज कैन बी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी, तो सबने डिक्शनरी या शब्दकोश देखा है। ओके, in your school days when you were doing mathematics, did you have something called as log tables, logarithmic tables? Yes, did you refer to it? रेफर किया आपने? हाँ सर, रेफर किया। Did you mug up these things? Did you mug up these things? No sir, I did not. Did you read everything in detail? Read every detail? No. So why did you and how did you use them? Whenever needed for specific topic or specific reference in depth. True. So somebody wrote कि सर मेरे पास सविंदर सिंह है, वेरी गुड, पता चल गया सविंदर सिंह क्या है, रेफरेंस बुक है। माजिद हुसैन क्या है, रेफरेंस बुक है। डीआर कुल्लर क्या है, रेफरेंस बुक। So there is a topic called humanistic geography. Please read only that page, go to the content page, find out and read it, no problem. Yes, there is a topic called geosyncline, go to that page, read that topic, finish, no problem. Migrations, human migrations, go open the chapter, read it. Indian agriculture, issue of intensity, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी पे पढ़ना है। गए चैप्टर खोला, 2 पेज पढ़ा, काम खत्म। इज एवरीवन ओके? व्हाट आर दीस आर रेफरेंस बुक्स। सो इस पे हमने क्या लिखा है एवरीवन, मस्ट बाय बुक्स। ये तो होना ही चाहिए, मस्ट बाय, मस्ट रीड, इसमें पूरा डिटेल करना है। इज एवरीवन क्लियर विद दैट? सो आई एम मेकिंग अ डिस्टिंक्शन। सो द पर्सन हु आस्क्ड, आई डोंट नो हु आस्क्ड, मेरे पास सविंदर सिंह है, डिड यू गेट योर आंसर? आई वांट टू टेल यू दैट समबडी यू नो लाइक किसी ने कहा सर मुझे टॉपर ने कहा है कि सविंदर सिंह जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक तेरा पास नहीं होगा, ठीक है? सो आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स दिस वेज। संध्या सिंह रेफरेंस बुक लेने की नीड है क्या? बिल्कुल संध्या ले सकते हैं, ये 4 ही रखी है, लेनी चाहिए, बट अगर आपके पास नहीं है तो मैंने नीचे लिखा है संध्या प्लीज रीड दैट इन रेड, क्लास हैंडआउट्स विल टेक अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम दीस बुक्स, वेरेवर नीडेड संध्या आई विल बी यूजिंग देम। तो मैं लेकर आ जाऊंगा, मेरे पास जो हैंडआउट है उसमें भी आएगा। बट संध्या यू टेल मी दैट समडे द क्लासेस आर ओवर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यू वांट सम लैंग्वेज ऑन एग्रीकल्चरल इश्यूज इन इंडिया, एक डीआर कुल्लर होगी तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत ज्यादा बड़ी किताब नहीं। Ankita says, I left out in the last part, so I'm starting new from here. I prepared notes and learned books as you advised. Should I watch the foundation course and also can I add extra inputs? Please help me. So Ankita, first of all, you did human geography curriculum. So this is physical geography से शुरू हो रहा है. You can start this. But I would not want you to do the foundation. वो आपने कर लिया है, ठीक है? You don't need it. Foundation का काम क्या है? Basic things, so that you have already done that. Ankita is saying all PGC and HGC. तो तब Ankita, you need not repeat the whole course. You do only. अब मेरा course क्या हो जाना चाहिए आपके लिए? Reference book होना चाहिए. The topic which you are not feeling comfortable with, उसको आप attend करिए. सर आई ऑल्सो हैव ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, आरडी दीक्षित लेना होगा क्या? सपना, माजिद हुसैन में जो मेंस का पार्ट है दैट इज नॉट वेरी वेल कवर्ड, बट इफ यू हैव दैट यू कैन होल्ड दैट, नो प्रॉब्लम। अभी आरडी दीक्षित नहीं लेते। So there is no reprint of Made Simple. I searched it of 2017. Should I go for it? Yes, 100% Harsh. Go for the last edition of 2017. That's it. So मेरे पास खुल्लर नहीं है माजिद की इंडियन ज्योग्राफी. Should I buy? So look at Anirban. Check on that book by Majid Hussain. If it is geography for GS, if it is geography for GS, then you buy. If it is geography for optional, then you can stick to that. No need for खुल्लर. ओके डॉली, आपका आंसर हो चुका है, सेम एज दैट। सर हाउ टू डू विद नोट्स, वो बताएंगे अंकिता। कौन से नोट्स अंकिता आप कोर्स कर चुकी है? नोट्स की भी टेक्निक्स आपको क्लास में बताई जाती है, आप वैसे कर ले। प्रियांशु सेइंग सर खुल्लर 2020 एडिशन, माय अटेम्प्ट इज इन 23 सर, शुड आई वेट फॉर द न्यू एडिशन? प्रियांशु एंड टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, अपॉलॉजीज, प्लीज डोंट रीड मी अदरवाइज। डॉक्टर खुल्लर इज ऑलरेडी 80 years old. अब नई एडिशन आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो। एंड नई एडिशन में I'm just saying, I'm not saying anything else. I'm saying he's, may he live long. And I'm saying कि जो एडिशन आएगी आपको लगता है वही अपना काम करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई और करेगा? Some ghost writing will happen. ठीक है, 23 में दे रहे, उससे पहले तो प्रियांशु मैं अपनी किताब निकाल दूंगा, चिंता मत करो। लेटेस्ट बुक विल कम टू यू ऑन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, सो यू वोंट हैव टू बॉदर। अभी ले लो कोर्स के लिए। सर मेरे पास एनसीईआरटी और किसी से जीसी लियोंग ली है, कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है? हिंदी मीडियम। बेटा उर्मी, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आपको ये हिंदी में अवेलेबल है, दीज रेफरेंस बुक्स यू विल हैव टू बाय, ठीक है? जीसी लियोंग डजंट कम इन हिंदी ईदर, वो हिंदी माध्यम वालों ने कुछ कर दिया, इज अ डिफरेंट थिंग।
So should I add in the old ones and attend these lectures? I think I will keep me in revise. Yeah, you can keep on adding. Prakash is saying, sir, आप book लिख रहे हो? Yes, I am working on book on environment and geography, both the things for GS and optional that will be coming out. Get that? So आ जाएगी, चिंता नहीं करो. तो आपके अटेम्प्ट तक बिल्कुल आने वाली है. सो एनवायरमेंट की तो कोशिश कर रहे हैं हम प्रीलिम से पहले ही वो किया जाए. कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी हो रहे हैं, कुछ थिंग्स वी आर वर्किंग. सो लेट्स सी हाउ दे वर्क. सो इज एवरीवन क्लियर अबाउट द बुक्स आल्सो? द बुक्स, द रेफरेंसेस व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, व्हाट शुड बी योर टारगेट इन दिस कोर्स. आई वांट टू टेक द ओरिएंटेशन वन बाय वन. देयर इज अ वेरी क्लियर डिजाइन. आज क्या क्या होना है. अब हम आ गए सैंपल ऑफ अ टॉपिक. ठीक है. व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको बताना चाहता हूं. प्लीज लुक एट द यूपीएससी नोटिफिकेशन. जो इस साल का नोटिफिकेशन आया ना, एवरीवन नोटिफिकेशन. In that notification itself, you will find syllabus of all optionals. So आप सोचते कहाँ से होगा? The syllabus of all optionals will be available. And I want to tell you, geography optional, principles of physical geography, paper 1 consists of 10 chapters, and in physical geography there are 5 chapters. One is geomorphology. Second is climatology. Third is oceanography. Fourth is biogeography, and fifth is environment geography. So now I have seen students joining my course, many of them joining courses after operating with some other optional also, and especially in these online formats. They tell me that the educator, they're told that my PDFs are enough, you just manage them, you just mug them up. So that's the educator's way of teaching. I'm a teacher who wants my students to write. I have 2 reasons for that. Number one is that in a physical class, there are a lot of opportunities where the teacher can individually, physically supervise the learning of a student. I believe that gives tremendous results. But if we are talking of online, it might turn out to be a Netflix experience where the teacher, as I told you, has a slide and he's showing, देखो ये मेरे notes हैं, फिर यहाँ पर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, and यहीं पर छोटा-छोटा लिख दो and all that. So that might make things fast. You will also enjoy it with a cup of coffee or whatever you consume during the classes. But I believe, writing at that time is another thing that takes things to our memory and our understanding. So I am a little old school on that. So first thing I told you, what should be your target. Second is what should be your book. Third is I am approaching this, you should be writing certain things. Get that? Now, in this I want to tell you that people who have done foundation with me, I have given some very important thing for them on note making. The rule is no notes during first 2 readings. Okay, when you're reading something for the first time, please do not make any notes. So I've done that. I told my students to approach GC Leong in a particular way. ऐसे करना है, कोई notes नहीं बनाने से. This is, I am not talking rocket science. I am not the first teacher who's saying this. I'm sure आपने दूसरे teachers को भी सुना होगा ये कहते हुए, क्योंकि जो भी इस exam को जानते हैं, every teacher who has really seen this examination knows that this examination kills you by its size, the syllabus का size. उसको cover करना आना चाहिए. There are many people who never cleared prelims and they don't even know the examination. They might even take up teaching. Possible. They have all the reasons to take up teaching. There might be people who are never even connected to civil services, some other academic thing. They came into teaching. Absolutely. For people who have given the examination, all levels of the examination, who have been into training students for so many years, they know the biggest killer for this examination is the syllabus. The biggest killer for the examination is the fear that I have to mug up everything. And both the things have to be dealt with on day 1 itself. So first I want to tell you that the syllabus is to be covered not by making notes, but by reading it. Get that? So when you start making notes on the very first day, from the very first page of the very first chapter, you will find that you'll run out of fuel within 3 to 4 days. 3 से 4 दिन में आपका जोश उत्साह सब ठंडा हो जाता है. You will give up. Whereas I'm saying that if first chapter is 20 pages, don't even think of making notes of it until unless you've read the 20 pages in one go. Please don't do that. You tell me that you're watching a movie. बड़े मन से आपको लगा कि गहराई है इस मूवी में, इसलिए मैं गहराइयां देख रहा हूं. You're watching गहराइयां. Yes. And you're watching it 5 minutes at a time. And you finish that movie in 50 days. 5 minutes at a time and in 50 days. Will you enjoy the movie? You really killed the movie. सब बर्बाद कर दिया आपने. True or not? So I want to tell you, you people are doing this to the books. Chapter लिया, पहले पेज पे नोट्स बनाना शुरू किया. NCERT का. Okay, अर्थ इज सर्कल बना ले. Okay, मैं सर्कल मेरा अच्छा नहीं बनता. Let me work on circle for 2-3 days. Okay, let me make it, okay, oblate, spheroid and all those things. Ah, very good. Okay, latitude, longitude चल रहा है. अरे टीचर तो आगे निकल गया. The teacher has gone very fast. I am lagging there, but I have to make notes. No, latitude, longitude. And why am I using only one color? Yes, red color, blue color चल रहा है. 5 days, this झिंटा drama continues. Yes, जैसे घर में शादी हो रही है ना, सब लोग excited है. 5th day क्या यार जल्दी विदाई करो यार, बहुत हो गया शादी में नाटक. True or not? So I want to tell you, civil services preparation is more of a marathon, not a 100-meter dash.
100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन। सो अगर मैराथन करना है तो आपको अपनी एनर्जी भी बचानी होगी। सो बी एफिशिएंट एंड bring precision. Efficiency and precision is the one which has been the biggest killers for most. So पहला तो वो सिलेबस खत्म आना चाहिए, नोट मेकिंग में पहले नहीं करना है। So I have a suggestion to all of you. First of all, मैंने आप लोगों को फाउंडेशन में जो एक लॉग सिचुएशन दिया था that this is my class today, I attended it and this is my class post class reading also which I did that, ये चाहिए। Second is notes do not have it on ruled sheets. जो लोग इस नोटिफिकेशन को नहीं जानते, please attend the course orientation and blueprint of foundation course. So anyone, can you share the link of the beginners foundation? मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा. If you can share it, please. So your notes should be blank sheets. जी अब हो गए लिंक नॉट अलाउड इन चैट, ऐसा हो गया क्या? बहुत सारे हो गए नहीं. Let me see. हाँ तो क्या बच्चे लिंक तो. So everyone, this is the link. If you have not done the foundation, some of you might be worrying about that beginner geography foundation. So that is the link. तो मैंने लिंक भी कर दिया. मेगा थैंक यू फॉर द एफर्ट एंड अदर पीपल आल्सो बिकॉज़ सम ऑफ यू आर फीलिंग अरे मेरा वो मिस हो गया. अगेन सेइंग उसी के कोर्स ओरिएंटेशन ब्लूप्रिंट में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस. सो ब्लैंक शीट पर अपने नोट्स लिखेंगे, क्लास नोट्स. जो डायग्राम बनवाऊंगा वो बनाएंगे आप. ठीक है. एंड आई वांट द इवनिंग यूज अ डिफरेंट कलर टू अपडेट दैट. पर इनको जो खराब करना करो. इज एवरीवन ओके? So whatever I have to talk in the class, I will be talking. Then I say, okay, go back home, read from NCERT and which chapter? Chapter भी बता दूंगा from GC Leong और chapter from Made Simple. ठीक है. अब आपने पढ़ा, you found some more information. So where do I add it? Add it. How would this look? This would look kachra. Kachra means garbage. So everyone, if I use the word kachra in the class, is it okay? Some of you might be offended. अरे कचरा बोल दिया मुझे नहीं. आप ये notes जो बनेंगे, they will look like kachra. They will look like kachra. Now tell me. What is the point of making the most beautiful multicolored notes because of which you failed and others are going to pass? Compare it with absolute kachra notes which only you can understand, nobody else can. This is your intellectual property. तुम ही पास करोगे. Yes or no? And offline classes में तो I understand. You make such beautiful notes, multiple colored and all that to impress the one sitting next to you. शायद इसी बहाने बात कर लेगी. आपके notes बहुत सुंदर है. Online में तो वो भी नहीं है यार. Yes or no? I've seen offline में तो in the classroom no. वो इतना अच्छा इसीलिए लिख रहा है कि इसी बहाने बात करेगी. So they are doing that. उसको कुछ मतलब नहीं. ऐसे लाइक मेनी टाइम्स वी डू प्रोक्रेस्टिनेट फॉर परफेक्शन. सब कुछ होगा. आई एम सेइंग अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो. उस पे ये कलर वो कलर. रिमेंबर होली इज अबाउट टू कम. होली पे आपका नोट शुड लुक होली नोट्स. उनको अपने नोट्स के नोट के बाहर लिख दो होली नोट्स. वो होली वाला मत लिखना, रंग वाली होली मत लिखो, होली नोट्स. मजा लो पूरा का पूरा. अपने नोट्स के बाहर क्या होली नोट्स. जो भी देखेगा अरे श्रद्धा के साथ देखेगा. ये सब सब अपनी बुक्स पर जो भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है सब ब्लैंक स्पाइरल और जस्ट शीट. प्रियंका शीट्स खो जाती. तो मेरे ख्याल से अभी आप स्पाइरल रख लें. जब थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, when you have the discipline, then you should go for blank because non-spiral because then you can add sheets. But अभी उतना डिसिप्लिन नहीं होता. ठीक है. तो टाइटल भी बता दिया क्या लिखेंगे. होली नोट्स. होली नोट्स को कितना अनहोली करना है यू कैन अंडरस्टैंड. अंदर पूरी होली होनी चाहिए. Get it? Some people send me this thing also snapshot. सर ये मेरे नोट्स हैं, not to impress सर, पर मैंने ऐसे बनाए. अच्छा लग रहा है. दहेज में ले जाओगे क्या? Why would you carry for dowry? My geography notes, my GC Leong notes. Your partner will also say पगले हो क्या? शादी से पहले क्यों नहीं बताया? I would have said no already. True or not? हाँ एटलेस को भी होली बना लो. जो करना करो, पूरा रंग करो. Remember as childhood, बचपन में आप में से कितने लोगों ने दीवारें रंगी थी अपने घर की? इधर बना रहा है, उधर बना रहा है, जो मन में आया, जहां कल्पना जागी. अब अभिव्यक्ति देखो अपनी. हाँ प्रकाश बोले सिलेक्शन के बाद बेचेंगे भी. और वी विल टेल द टॉपर्स आल्सो कि भाई ऐसे बनते हैं. पूरा का पूरा. मैं तो ऐसे ही लिखता था. अभी क्या होता है? इमेजिन टेलीग्राम पे पता क्या आता है? टॉपर्स नोट ऑन ऐसे. अच्छा टॉपर वो बैठ के तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा था. वो कहीं से भी कुछ भी फ्रॉड उठा के डाल देंगे एंड दैट्स इट. हाँ ठीक है उसके 2-4 पेज होंगे. दैट्स देयर. सो यू नो आई गॉट coming from ओमकांत. तो आई सेड ओमकांत तूने अपने नोट्स डाले टेलीग्राम पे? बोला सर ऐसे कोई पुराना जानने वाला था सम फ्रेंड. ही सेड यार यू आर टॉपर रैंक 50 व्हाटएवर इज 52 और समथिंग. तो तेरे रजिस्टर है क्या? सर उसने कॉपी डाल दिया. और सर दे आर एब्सोल्यूट रैंडम सर. ऑन द फर्स्ट पेज आई रोट दैट दीस आर वेरी रैंडम सो दे शुड बी यूज्ड अलोंग विद क्लास और टेक्स्ट. ये मैंने अपनी क्लास में उस टाइम मैं जिस इंस्टीट्यूट में था ओमकांत सौरभ पांडे ये लोग फुल बैच के स्टूडेंट थे. तो बोले सर वी स्टार्टेड विद दैट. उसके बाद हमने कई और जगह से कई सोर्सेज से हमने डाल दिया. इट्स ऑल खिचड़ी सर. आई रोट देयर फर्स्ट पेज दैट दीस नोट्स शुड नॉट बी यूज्ड रैंडमली.
आई सेड वो फर्स्ट पेज लोगों ने हटा दिया, उस पे लिख दिया टॉपर ओमकांत नोट्स। यस ना? सो पूर्वी कह रहे हैं ऑलरेडी होलीड वन एटलस, वेरी गुड पूर्वी, होली मुबारक, ऐसे ही होली करते रहो। एंड आई एम श्योर पूर्वी इफ यू हैव होलीड दैट एटलस, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, उस एटलस को उठा के मन करता होगा कि यार ये तो मैंने इसमें ये चीजें ढूंढी। एवरीवन नो टॉपर वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग दोस मल्टी कलर्ड नोट्स, वो सब दुकानों पे चल रहा है। प्रशांत सिंह सर क्लास के दौरान नोट्स बनाएंगे ड्यूरिंग द क्लास व्हाटएवर आई एम सेइंग। देखो क्लास में प्रशांत सिंह जी वास्ट क्लास में जो होता है ना पेज पर, उसे कहते हैं जॉटिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग सर बता रहे थे, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने लिख लिया। You will not write the whole sentence until unless I am dictating. Some places I will dictate also. Is it okay if I dictate? Some places I will dictate also. But otherwise, whatever I am saying, अभी मैंने ये सारी चीजें लिखी तो आपने कुछ लिखा होगा. I am sure some of you have written note making. Some of you would have made this also. That's okay. बात तो ओरिएंटेशन का डे है, so that's what we are talking. These are all jottings. But घर जाके जब पढ़ेंगे, so we will complete the sentence also. अब एक बात बताइए, whosoever asked this about making notes. You tell me that you are moving and you're going out to have some chola bhatura, and in between सच्ची क्लास भी चल रही है. Okay. हाँ भाई चलने लगा. Okay. ठीक है. Okay. Geography coming. That is one fellow doing that. Other fellow is sitting and he has a register also. Okay, this is it. I'm referring. अच्छा, atlas भी है. So who's going to gain more? And I'm not talking rocket science. I said, jottings in the class. Jottings in the class bring a degree of engagement with the class. Your takeoff from the class would be better. That is why I'm doing that, number one. Second thing is, jotting will also give you a framework to work on in the evening after class. There's a very scientific reason why I do things in the courses the way I do them. Get that? So I hope you get that. तो क्लाइमेटोलॉजी जैसे मैं आपका हर टॉपिक, एवरी टॉपिक विल स्टार्ट विद, सो हर एक टॉपिक किससे शुरू होगा? सिलेबस से शुरू होगा. सो दिस इज द यूपीएससी सिलेबस. टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स, हीट बजट ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स, मॉनसून जेट स्ट्रीम्स, एयर मासेस, फ्रंटोजेनेसिस, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, types and distribution of precipitation, weather and climate, Köppen, Thornwright, Trivartha classification, global climate change, role and response of man, applied climatology, urban climate. Question number 1 to everyone who's listening to me. If you did foundation, have you heard 60% of terms which are there in the syllabus already? Just that. So that is the role of foundation. And वो 60% चीजों का तो डर निकल गया ना. The fear is gone. Now we need to upgrade it to the level of UPSC. तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट होते हैं, तो सर ने वैसे भी बता दिया था, मैंने भी एनसीईआरटी से पढ़ा. So that is the role which is there, and the class definitely has to go to the next level. So that is one. Second thing is, if I ask you to write 20 words on the things you know, that is okay. But if I ask you to write 200 words, is a challenge or not? I don't want to fool you with this. देखो geography तो बड़ा easy है, ये ऐसे हो जाए. 20 words is okay. What are temperature, pressure belt? Okay, sun is heating the earth, and at equator there is a warm belt, and at the pole there is a cold belt. That's it. But उसका technicality of it, the real content will come in the main course. So पहले तो अंतर समझना है. What is the difference between foundation and main course? Foundation is like dating. Get that? हाँ, आपको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है. So nice. Main course is marriage. अबे तुम्हें ये पसंद था, पहले क्यों नहीं बताया? ओफो, तुम्हारी माँ. ये सुनो, big challenges. So main course will tell you where the shoe pinches. Main course will actually tell you कि भाई सुनो, ये वाला टॉपिक मैं छोड़ के जा रहा हूँ. Yes, true or not? So मैरिज में सुनो, इस पे कोई बात नहीं होगी. और उसमें कोर्टशिप में या डेटिंग में, हाँ these are okay. मैं बिल्कुल, मुझे खुद एडवेंचर स्पोर्ट बहुत पसंद है. तुम कहो तो रस्सी बांध के कूद जाऊं, बंजी जंप कर लूं, और तुम कहो तो रस्सी के बिना भी कूद जाता हूं. ऐसे पगले भी होते हैं. ट्रू और नॉट? एंड आफ्टर मैरिज मैं क्यों कूदूं, रस्सी या नो रस्सी? आई डोंट वांट टू भाई. इट्स माय लाइफ. पहले इट्स आवर लाइफ, फिर माय लाइफ हो जाती है. सुनो, सो मेन कोर्स आपको बताएगा कि भाई ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी तो यार ये बड़ा टेक्निकल है यार. सर इसका आसान तरीका बताइए. सो प्लीज टेल मी इजी वेज. हियर यू विल लाइक टू गेट द टीचर्स टेक्निक्स. डू यू गेट दैट और नॉट? टीचर्स टेक्निक यहाँ पर आएगा. यहाँ पे द टीचर मेक्स अ डिफरेंस. यहाँ पे द टीचर कैन मेक डल थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू. गेट दैट? और यहाँ पे द टीचर कैन फूल यू आल्सो. देखो बाकी किसी को नहीं आता, सिर्फ मुझे आता है. मैं पृथ्वी पर आ गया भगवान नाम के बाद, तुम्हारे काल में आया हूँ, विचरण कर रहा हूँ, मेरी वजह से सारे बच्चे आईएएस बनते हैं. ये सर्किट वाले जो टीचर है ना, वो भी है, उनको रोक नहीं सकते. तो थोड़ा ढोल हो गया, इन द ऑनलाइन टीचिंग ढोल फेलो हैज आल्सो कम. जब तक ढोल ना करो तो आता है. कोई नहीं पढ़ा पाता, मैं ही पढ़ा पाता हूँ. 2008 के बाद में सिलेबस चेंज हुआ, सिर्फ मेरे को आता है, वो बाकी लोग को नहीं आता है. क्यों? 2008 के बाद क्या जुलाब खाया था? व्हाट हैपेंड टू यू? एंड वी आर टॉकिंग इन 2023. मैं बोल रहा हूँ, आप जाके वीडियोस देखिए. वो बोले कि 2008 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद मैं ही जानता. अबे 2013 आ गया, 23 आ गया, 15 साल हो गए उसको. 15 years have happened. तेरी दुकान अभी चली है. ये सुनो,
So you'll find such fake things also coming. Such fake things will also coming. So please enjoy that. No issues. तो मैंने कहा ना यहाँ पर टेक्निकल में हम बहुत सारे खेल खेल सकते हैं. So मेरा इंटरेस्ट ये होगा कि I want to make it interesting for you and I want to make you challenge on this. यार ये इतना डिफिकल्ट क्यों? कैसे ना? और उसके बाद बहुत टॉपर भी बने जो उन टीचर से नहीं पढ़े. See, I am again saying everything. खुशी, you tell me one thing. Tomorrow you clear the examination. You get into the top 10 ranks. Will you say that it was only because of Sachin sir that I got this rank? I'm sure you have teachers. आपके स्कूल से टीचर्स ने एक ऐसी आपको अंडरस्टैंडिंग दी कि आप टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो वो कहना चाहते हो समझते भी. तो if you say Sachin sir was another very strong input on that, that is real. Unreal पता क्या आता है? वो टीचर बाजू में खड़ा, बताओ मेरे कोर्स से कैसे पास हुए? सर आप ही तो थे, आप ही ने तो बताया. अभी इस चैनल पे ये सर के साथ खेल खेल के गया, दूसरे चैनल पे दूसरे सर के साथ था. सच में किसके साथ था बे? ये सुनो. एंड वही टीचर बोला मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, लड़का तो लड़का हो जाता है, चलो मुझे आता है. अब तुम्हें आता है. वी आर क्वेश्चनिंग व्हाट हैपेंड टू एजुकेशन. आर यू इवन अ टीचर? आर यू इवन अ टीचर? Because a teacher would have that humility. भाई बहुत सारे लोग जानते हैं. I got an opportunity that Kalpana, Tanuj, Rishi, Urmi have come to learn from me. We are living in a country with huge 1.3 billion population. और मैं उसमें कहूँ I am the only teacher. कलयुग में मेरा अवतार हुआ है. लोग कलयुग अवतार भी घूम रहे हैं. So that continues. ठीक है. अलार्म बज गया, क्वेश्चन डालना है. चलिए तो आपके लिए एक्सरसाइज टाइम आ गया है. Before I put my question. So general reference that is also there. पहले मैं बहुत परेशान था, मुझे लग रहा था कि मैं पास होऊंगा. सर्वेश्वर पता नहीं क्या लिख रहे हो बच्चे. आध्यात्मिक बातें मत लिखो. सो एनसीईआरटी इज एवरीवन ओके? मेड सिंपल. अब ये जो चीजें ना, ये इंप्रेस करने के लिए स्ट्रॉलर एंड स्ट्रॉलर, टार्बुक एंड लुटजन, क्रचफील्ड. सो मैं देखता हूँ कि लाइक ऐसे बड़े बड़े इंप्रेस करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे ज्योग्राफी आता है और किसी को नहीं आता. तो मैंने कहा पहले दिन बता दो ये किताबें होती टार्बुक एंड लुटजन. इसकी जो पेपर बैक है ना, ये 8,000 रुपए की है. 8,000 की तो बुक ही है. मजा आया कि नहीं? सर आपके पास है? मैं उसी से पढ़ाता हूँ और मैंने बहुत पढ़ा है. और देयर आर सम टीचर्स जो आपको पीएचडी भी कराएंगे. वे सब टीचर्स जो आपको पीएचडी भी कराएंगे, जैसे और कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं. नाउ टेल मी, व्हेन पीएचडी इज नॉट नीडेड, सम ऑफ यू प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नो, इंजीनियरिंग के लिए क्या होगा, एमबीबीएस के लिए क्या होगा, नीट जी के लिए क्या होगा, और प्रोबेबली इवन फॉर सम ऑफ यू प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग, सम ऑफ यू प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए, एसएसबी. ये सब किया कि नहीं किया? किया सब लोगों ने. कुछ लोगों ने बीबीए टाइप किया होगा एंड ऑल दैट. वर यू रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी? एनी ऑफ देम? वर यू रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी? एनी टीचर हु इज मेकिंग यू डू पीएचडी, इज ही सपोर्टिंग यू? इज ही सपोर्टिंग यू? तनुज बोला आईआईटी प्रिपरेशन में भी आपको क्या न्यूक्लियर फिजिक्स आना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए? सच बताओ मुझे, न्यूमेरिकली तो सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि पीएचडी तो फिजिक्स में बहुत अलग है भाई. ये सुनो. सो नाउ देयर आर ज्योग्राफी टीचर्स, दे विल टेक 5,000 क्लासेस. मुझे सब आता है, मैं ही सिखा सकता हूँ. मैं 5,000 में तू नहीं पढ़ाएगा, पूरी पेज बाय पेज पढ़ा रहा था. These are the same people who did not clear the examination because they started their preparation by making notes of every page, and now their notes they are teaching in the class. सर बट ये है बहुत मजबूत सर. 5,000 पेज के नोट्स सर, सारा मिल गया मुझे. 5,000 पेज ऑन जियोमॉर्फोलॉजी. How will you digest it? So you can go for that also. You can go for the PhD वाला also. So there are two types of categories. एक PhD करवा रहा है एंड कह रहा है और कोई नहीं है. दूसरा तो अवतार है, कल की अवतार, that I have taken अवतार for you. एंड मैं इस बुक से पढ़ता हूँ. So आपको कौन सी बुक पढ़नी है? NCERT made simple and syllabus. Teacher's job is to create interest in things. Teacher's job is to create the challenge in that. And teacher's job is to give you a practical way to attempt PYQs plus expected. Because I asked you what is needed over here. हम टारगेट क्या कर रहे हैं? 300 plus. Is everyone okay? Everyone okay? Everyone, you have 2 minutes. ये सिलेबस आपके पास है, सिलेबस आपके पास है. Whatever you feel is the easiest, वो आइडेंटिफाई करो. ये पूरा कॉमा is actually picked up from the syllabus. Whatever you feel on your notebook, please write down. ये तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ. Just that. Please identify the easy ones, and then I have something to share with you. Quickly, 2 minutes, everyone. सिक्सटी परसेंट वट एवर यू फील, जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ.
परफेक्ट। अब मुझे बताइए विच आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, जो कभी नहीं सुने, जो कभी नहीं सुने। I get that. Weather, climate, planetary events, बहुत अच्छा लगा। That shows, that is just telling me that you know something about NCERT. वो just मैं थोड़ा सा assessment करना चाहता था कि are my students able to do that or not. Stability, instability, Köppen, Thornwhite, absolutely okay. ठीक है। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, चलिए अप्लाइड भी आया, प्रियंका ने अप्लाइड का, तो इस पे भी बात करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अप्लाइड भी किसी ने लिखा है। थॉर्नवाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स? तो सभी लोगों का जेट स्ट्रीम्स भी एक एंट्री है विच आई कैन अंडरस्टैंड, विच इज अ हायर कॉन्सेप्ट, दैट्स आल्सो ट्रू। ठीक है। फ्रंट टू जेनेसिस। अब मैंने इसको ब्रेक किया। एलिमेंट्री टॉपिक्स, आपके एलिमेंट्री टॉपिक्स में आ रहे, प्लीज टैली देम नाउ एवरीवन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच यू आइडेंटिफाइड एलिमेंट्री में आ गया। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल एडवांस लेवल है, ये तीनों एक फैमिली के हैं। वर्ल्ड के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ये कोड्स है। सो आई वांट टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी। मुझे एक बात बताइए, हैव यू हर्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? क्या है ये पीरियोडिक टेबल? व्हाट वाज दिस पीरियोडिक टेबल? अरेंजिंग ऑल एलिमेंट्स दैट यू नो इनटू अ टेबुलर फॉर्म बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ऐसा था ना? सो ये क्या है? ये टेबल्स है। किसने बनाई? हु वाज मेंडलीव? मेंडलीव वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यहाँ पे कौन है? कॉपन, थॉर्नवाइट, ट्रेवार्ड। अच्छा, वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स के कोड बना के टेबल बनाए। इजी। सो यू सेड दैट इज डिफिकल्ट है। इफ आई टेल यू द स्कीम, फिर तो कोड ही रह जाएगा ना। सो कोई डर नहीं है। यस, सिंपल। आई नो, यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अगर पहले ही उसका डर निकाल दिया जाए, अच्छा ये तो दिस इज ओनली दिस, दैट्स ओके। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी? सर ये तो पता नहीं। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ। No, Dhananjay, it is not rainfall. So I have been seeing that in the morning, it was calm sky, calm air, and in the area that I am in, and slight cloudy is also there, and otherwise the wind is not very strong. Morning to evening, it remains like that. Morning to evening, it remains like that. That is stable. Do we get that? What is unstable? Morning it was bright and sunny. Afternoon it became clouded, rain, thunders, and evening again it is calm. तो ये क्या हो गया? Instability. अच्छा, ये होता है stability. So instability does not mean stability does not mean no rain. If it was raining in the morning and it has been raining the whole day, तो वो stable है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन वैसा ही stable, तो क्या कहते हैं उसको? मॉनसूनल एक एयर मास आ गया, पूरे दिन बारिश हो रही है, मौसम राम चेरापूंजी, that's it। आपको एक बात बताऊं, day before yesterday there was the news that Russia is bombing all the nuclear facilities of Ukraine। पूरे वर्ल्ड में टेंशन हो गया ना? Instable, unstable। Ukrainian president said, NATO, please make it a no-fly zone, Europe a no-fly zone for Russian planes, because Russian planes are coming and bombing. So you declare it as no-fly zone. So NATO said, no, we cannot declare it as no-fly zone, because when you mean no-fly zone, actually you put your aeroplanes in the sky, and if any plane is seen, you can fire it. So if a Russian plane is flying over Europe, and if a NATO force fires on Russian plane, तो उसके बाद तबाही शुरू। So they said, hello, Ukraine, we are willing to help you, NATO, willing to help you, but we cannot escalate the conflict to greater Europe, because once this is started, अगर हमने एक रशियन प्लेन को उड़ाया, so then it will turn into a world war. So now the Ukrainian president is very unhappy. So he gives the statement, ये क्या confused और डरे हुए NATO and all that. So I can understand वो his emotions, because NATO was the one who was wooing him. ऐसे आ जाओ हमारे पास हो जाओ. So as a lover, like you are with Russia. Russia is your loyal partner. अभी क्या हो गया, उसे ditch कर दो, गहराइयां, इधर आ जाओ, try us. Yes or no? Now Russia has come to beat you. True. Russia has come to say this is not allowed. Now is Russia correct in that? Why, Russia has ways to deal with it. You can't attack a country, but then Russia is choosing whatever way. But why were you okay with it? Because you thought NATO अपने साथ खड़ा है. NATO नाट गया. You're asking NATO कुछ करो. NATO कौन? मैं, अरे भाई ऐसे वो तो हो गया था, वो तो we met in the in the parlor, वहाँ पे मैंगो शेक पिया, yes आइसक्रीम शेक, that's okay. ये थोड़ी कि यार इतना मोहब्बत नहीं हो गया तेरे से अभी कि जो है रशिया को जाके बम मार दूं। ट्रू है ना? सर्किट बोलते हैं लाफा एक को मारो दर्द दूसरे को, इतना प्यार नहीं हुआ अभी। Yes or no? So that's what we are talking about. That's what we are talking about. So instability is very, very rampant in Europe right now. What can happen next? You don't know. You seriously don't.
और मैं एक और बात बताऊं, वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, रशिया उड़ाए ना उड़ाए, यूक्रेन ही उड़ा दे, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड दैट रशिया ने किया. यू सीरियसली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड. ट्रू और नॉट? कि देखो तुम आए नहीं, हमने, होता है ना, अच्छा यू आर नॉट विद मी वैलेंटाइन पे, मैं अपना अभी काट रहा हूँ, ये वाले भी तो खतरनाक होते हैं. Have you heard of Cuban Missile Crisis? Have you heard of Cuban Missile Crisis? Soviet Union had placed nuclear weapons in Cuba, which is just next to US. US was ready to attack or not? You cannot send, I am the world top, pole in the world geopolitics, I am that powerful. तुम मेरे बाजू में nukes लाके खड़े कर दोगे, और अगर मैंने मान लिया तो, then my power is also low. Yes or no? Same as US has done in Turkey. तो सौरभ ने कहा सर US ने टर्की में किया, बट टर्की अभी दूर है. टर्की एंड रशिया, you know there is Black Sea, वहां तक भी ठीक था, रशिया झेल गया. Now you come all the way to Ukraine also. यूक्रेन पे भी अपना वो है. Now it is a very big challenge to the status which Russia sees its role in the geopolitics. Do you get that or not? And Russia छोटी चीज तो नहीं. Will India tolerate such things in its neighbor if China does it in Nepal, Bhutan, Myanmar? Will India tolerate? Well, answer is no, but remember, we are no Russia. Do you know China has become closer with Nepal also? Do you know China has ties with Myanmar also, Sri Lanka also? इसी में अगर पुतिन होता तो? Think about it. Global geopolitics is about power. अभी 56 इंच का सीना कुछ नहीं कर सकता, वो तो आप बोल दो कि यार 70 साल पहले हुआ था, but अभी we are talking about that. Can we escalate things the way Putin has done? AP saying Japan wants nuke from US. AP, tell me, Ukraine destroyed all its nukes. Today, if Ukraine had nukes, can Russia look at it like this? And this will go as a very bad experience for countries who are planning to destroy the nukes. Now they will not. In fact, many others will try to acquire, as you are saying, Japan is. And tell me, if UN doesn't do something very critically to stop a war, let's forget the warring factions, whether it is Russia or Ukraine, tomorrow can it take action to that pagla called, what is his name, Kim Jong-un, pressing the button? I'm just saying, Raj, you are absolutely correct. Whatever you're saying, you're absolutely correct. ये सब बात क्यों कर रहे हैं? Do we understand what is instability? Instability is समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर सकता है. True or not? And it will be all decided by who has more power. China, the way it is being belligerent with its neighbors, China is also testing the waters with the world. True or not? US and NATO were also testing water with Russia. धीरे-धीरे इसको भी अपने fold में, yes or no? A point might come that you will draw a line. But the fact is, drawing a line at the cost of so many lives, destroying a country. The closest I can think of is, it is like honor killing. Heard of honor killing? Intercaste marriage कर लिया, inter-religion marriage, honor killing. So I understand Russia and its concerns. I understand US, NATO and whatever they're doing. I also understand Ukraine going here and there. But going for a war like this and destroying a country, is this the only way? Ukrainians pay the cost. That is what is heartbreaking. That the global diplomacy has no other way of dealing with these issues. Isn't this a patriarchal society where only one solution is? बातों के भूत क्या होते हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हर चीज पे लात ही है. Preeti saying war is not the solution. Preeti, but then that's what a patriarchal society is all about. Power hunger is all about this. Yes or no? कहीं पर भी आप सोचिए. Many ways, but they do not use. सौरभ, वही मैं कह रहा हूँ ना. Many ways, those ways are difficult. You will have to talk to people. You will have to engage them. Preeti, talks and dialogues is the way. And coming from a woman, I understand women are about talks and this thing, dialogue. But men are impulsive. Whatever they've done. अच्छा एक बात बताओ, अब जो भी हो गया, he thought like the war will be over soon, but the war has pulled off. So अब क्या करें? अब escalation of commitment हो गया. True or not? Very strange situation. How do you come out of it respectfully? How do you come out of it without destroying everything? Abhishek is saying it's Putin's war rather than Russia. Abhishek, that is one point of view. As I told you, some people are thinking, like the Western powers were testing Russia, not just Putin. So your point of view is not wrong, Abhishek. Your point of view is absolutely correct. I'm saying some people are saying of the view that Western powers this time had gone a little too much, and in international diplomacy, this is what Russia had to do. But I'm saying I don't know who crossed the line, but is this the only way that if you find an intercaste marriage, kill the kids? आपको नहीं पसंद है तो आप गए और आपने ऑनर किलिंग यही होता है ना, ऑनर किलिंग यही होता है. एपी सिंह बट सिविलियंस आर किलिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और एक बात बताओ, धीरे धीरे यूक्रेन को वो कैप्चर कर, अब क्या उसको हर गली हर कूचा कैप्चर करना होगा? And in fact, I am very, very clear with all the stories which Zelensky has made.
जेलेंस्की को हटाया जाएगा, उसकी जगह कोई पपेट गवर्नमेंट आएगी, तभी तक टिल देन ही हैज टू वेज द वॉर, यस और नो? अभी बताइए रशिया वापस कैसे जा सकता है? हाउ कैन रशिया गो बैक? नाउ द स्टोरी हैज स्टार्टेड, द स्टोरी हैज स्टार्टेड। नाउ इफ रशिया गोज, व्हाट डज ही से? सॉरी, और या फिर आगे किया ना फिर और मारूंगा, ऐसे कह के? यार घुसना बहुत आसान है ना चक्रव्यूह में, यू एंटर, हाउ डू यू कम आउट नाउ? So that you don't lose face, so that you are able to convey the message also to the West and whatever we are looking at the cost of Ukrainians, at the cost of Ukrainians. So I'm saying, ये जो मैंने आपसे बात की ना, this is also geography, this is called human geography. We have a topic called geopolitics. ये सारी चीजें न्यूज़ में भी आएंगी. Geopolitics, economic geography. How will the supplies which are stopped from Black Sea, वो कैसे उसको compensate करेंगे? Ji is saying, sir, if son has the possibility beating parents after intercaste marriage, then parents taking action before is also important. जी यार दिल पे मत लो यार, तुम तो seriously ले रहे हो. I तो just gave an example. I am saying actions are there. I am not saying that his action is wrong or Russian action is right or wrong. I am saying was this the only action possible? आप प्लीज मेरे मैसेज को समझे, ये मत सोचे कि वो बच्चा और वो अपने माँ बाप को मार देता, इससे पहले माँ बाप ने, बूढ़े माँ बाप ने, वो भी तो मैसेज आता है ना, बुढ़ापे की लाठी बूढ़े माँ बाप बेचारे तड़प रहे हैं ये आजकल के बच्चे. एक वो वाला भी आपके फैमिली ग्रुप में आता होगा, जितने बड़े बूढ़े वाला मैसेज भेजते हैं कि नहीं? So can we expect from some China or Taiwan like the ongoing? बहुत सारी चीजें हैं. This will act as a precedent. This will act as a precedent in the global this thing. So दिल पे मत लो, कुछ लोग ऐसे भी ले रहे हैं, अरे ये तो पुतिन के खिलाफ है. भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. मैं कह रहा हूँ geopolitics is cold. It is also about national interest. Did India abstain from voting or not? इंडिया ने कहा भाई अपना इंटरेस्ट पहले देखो. Very clear on that. मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे बाबा नहीं बन रहा हूँ. It is very easy to become baba in an online class and say this thing. And think they have their reasons to do whatever they're doing. They have their reasons to do whatever they are doing. Was this the only way? Was this the only way? That's what I'm saying. मत सोचो कि बच्चों ने माँ बाप को मार दिया अपने उसके इंटरकास्ट के साथ एंड ऑल दैट. ये यहाँ पे कोई आगे इंटरकास्ट को सपोर्ट कर, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. कुछ भी मतलब ये भी ऑनलाइन में चर्चा का विषय कुछ भी होता है. Why not other countries don't take any action like US? So Kushi, I think all the Western nations have gone for strict sanctions. ऐसा नहीं है कि UK and France are ambivalent. They have also done that. But वही तरीके हैं फिर, और क्या 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 बताया जाए? There has to be something decisive. तो अनस्टेबल समझ में आ गया. चलिए मॉनसून और जेट स्ट्रीम क्या है? मॉनसून और जेट स्ट्रीम ये चाइना है, ये कौन है? नॉर्थ कोरिया है. स्पेशल केसेस चलिए अलग से पढ़ने होंगे. हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे इनको. ध्रुव बोला रिवर्सल विंड. ध्रुव, चाइना इज नॉट जस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, चाइना इज अ लॉट. सो मॉनसून हैज गॉट मेनी हिडन सीक्रेट्स. विल नो द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, द वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून, वो सारी चीज पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. एयर मासेस एंड फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? एयर मासेस ये यूएनओ होता है. पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको वो कहते हैं. और ये साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स क्या होते हैं? ये रशियन मिसाइल्स होती हैं. ट्रू. अब एक बात बताओ एवरीवन, आई एम सॉरी, यू माइट बी वंडरिंग, अबे ज्योग्राफी था ये तो आईआर बना रहा है. कैन वी सी दैट दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली सी दैट? अच्छा, मॉनसून इज अ स्पेशल फिनोमेना इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट. चाइना इज अ स्पेशल थिंग. नो, चाइना क्या कर सकता है? आपको पता है मॉनसून पे इंडियन इकोनॉमी इज अ गैम्बल ऑन मॉनसून, ऐसा सुना है? कैन आई से वर्ल्ड पीस इज अ गैम्बल ऑन चाइना टुडे? चाइना मॉनसून है. चाइना कभी भी अपनी दिशा पलट सकता है. Now suddenly we see, अच्छा that's it, we can. So it is a huge influence. Monsoon is a huge influence. Jet streams. So मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चीजों को इतना फ्री देख पाते हैं ज्योग्राफी में, not that you are going to write that, वो सब गलत है. I am going to tell you the technical parts of it. That is that. ठीक है. उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं, किसी ने कहा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी. यार एक बात बताइए एवरीवन, आपने सुना है ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई कहाँ कहाँ पे लगानी चाहिए? हैव यू हर्ड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सूखे क्षेत्रों में? यही तो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, और क्या? हैव यू हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल रेन? ओ हाँ सर, ये भी तो सुना. हैव यू हर्ड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? आईपीसीसी में कार्बन को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? तो आप कह रहे हो सर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी पहली बार सुना. सो स्टूडेंट गेव मी अ कॉल एंड ही सेड सर मेरा इंटरव्यू है, आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी इंटरव्यू एंड ज्योग्राफी इज माय ऑप्शनल, आई हैव बीन योर स्टूडेंट सर, आई वांट टू नो एन आंसर टू द क्वेश्चन सर, हाउ विल ज्योग्राफी बी यूजफुल to an administrator? How will geography be useful to an administrator if you become an IAS officer? How will geography help you? Sir, ये question आ गया तो मेरा क्या होगा? So I said, what is your background? He said, sir, I am a BA in geography. I said, जूता नहीं है भाई मेरे पास, otherwise जूते से मारता. Please don't take it otherwise. I said, you've been my student. You are a BA in geography. You are telling me how will geography help an administrator? Chapter 1, lithosphere. Earthquakes. Understanding of earthquake will help you in disaster management. Soil erosion in fertility things. Chapter 2, cyclone.
Chapter 2, rainfall, monsoon will help you as a big administrator. Chapter number 3, oceanography. Yes, oceanography is coastal mangroves, coral reefs. Chapter number 4, biogeography, entire conservation of plants and animals, what we are talking about, the species. Chapter number 5, environmental geography, climate change, desertification. Chapter number 6, perspectives in human geography, the idea of regional planning, the philosophy of uniform development in the country. Chapter 7, population geography, how to decide the population policy of India. Chapter 7, part 2, settlement, where should be urban settlements, where should be rural settlement. Yes, chapter 8 is, I think, regional development, या फिर economic geography रह गया. Chapter, I think, 7 was economic geography. Where are the resources, where to set up industry. I said, मैं आकर जूता मारूं या तू मार लेगा अपने आप को जूता. You're asking me geography optional, my student, and you have done your own graduation. वो टीचर की भी नाक कटवा दी, मेरा तो नाक कान सब कट गया. तू पूछ रहा geography कहाँ यूज करेगा? You're asking me where will you use geography? Do you know there is a book called Geography of Mind also? In fact, even for geopolitics, अगर आपको अटैक करना है, कहाँ से अटैक करना है, to win a war you need geography. I hope you understand what is geography. तो किसी ने कैसे applied climatology बहुत तगड़ा है. So there was this girl, she was, I think, I don't remember, long ago, पता 2011 में, 11 का होगा. It's been almost 10-11 years. बिल्कुल याद नहीं. So I don't remember her performance. यहाँ से पढ़ी थी वो. She was from Delhi School of Economics का Geography department से. She was doing a masters, and she cleared. She was, I think, among top 20 ranks. शायद 22 था something. She is in Karnataka. वो लड़की भी कर्नाटका से. So that year, in mains, a question came. Essay paper. History may change. Geography need not. So कर्नाटका की लड़की थी. She came from a very middle class family. Yes, very middle class family. बहुत ज़्यादा family ऐसा नहीं था कि economically well to do थी. This girl was, she had many other sisters, so बड़ी family थी. I think she had a younger brother, but many sisters. So long family. काफी वो थे. तो उनमें वो दिल्ली में आ गई, वो पढ़ रही थी, and she cleared the examination. Very very humble girl. ठीक है. तो साउथ की थी, तो ऐसा भी नहीं था कि लैंग्वेज में हिंदी था, तो you know, like I could see her growing in that. So when she cleared the examination, she came to me. Okay. And she said, sir, thank you for all the help. And she came to meet all the teachers. So आते हैं अच्छे बच्चे सब टीचर से मिलते हैं. ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के सुनो यहाँ पे मेरे साइड में वीडियो में आओ, बोलो सर आप नहीं होते तो मेरे बाल नहीं होते, उड़ गए होते. So that's a different story. So she said, sir, this time mains was very fun. I said, good. She said, sir, वो ऐसे आया था, history may change, geography need not. So I wrote on this. Remember, बहुत से लोग इस बार रो रहे हैं. Many people are crying. ऐसे का पेपर ऐसा आ गया, कोई सोच ही नहीं सकता. आप सोचिए टॉपिक. This topic is like that or not? I'm talking about 2011. A girl clears the examination choosing this topic. पूरा सोच समझ के. लड़की with a geography background. लड़की with a geography background goes for this topic. So I said, you know, ये किस लिए लिया? Because you are geography. बोली ना, this topic has got nothing to do with geography. I said, then what? She said, I started my essay with this, sir. I started essay with that I come from a poor family. I come from a poor family where you know, we are living in a small house, all the kids and mama, papa, whatever they manage. एक गरीब घर से हूँ, वहाँ पर वो था. So the geography of that house has not changed in the last 20-25 years. But as we kids are growing, we are creating history. So what has happened in that house? That has changed. So history may change, geography need not. Very proudly she told me, sir, मैंने ऐसे शुरू किया था. Yes, sir. It is generally said that history has two eyes. क्या है ये भी मैं पढ़ लूँ. It is generally said that history has two eyes. One is chronology and other is geography, or we can say time and space are significant. So देखिए खुशी जो ये पॉइंट बोल रही है, ये कोचिंग का रटा रटाया है और ये गलत भी है. खुशी रटा रटाया और ये बच्ची जो पास कर गई है, इन्होंने ओरिजिनल दिया. ये कोचिंग वाले बहुत बता रहे हैं और मैं तो उसका सेंटेंस भी बताता हूँ. Geography is the handmaiden of history. Yes, all geography should be read geographically. All history should be read geographically, and all geography should be read historically. वो वहाँ पर है. तो आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ. तो आप गलत कोट कर रही हैं. आई एम सेइंग खुशी यहाँ पे बच्चे ने ओरिजिनल लिखा है. कैन यू सी दैट? जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ मैं इतिहास रच रही हूँ. द ज्योग्राफी हैज नॉट चेंज बट द हिस्ट्री हैज चेंज. एक एग्जांपल और दूं आपको, आसान एग्जांपल. इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज नॉट चेंज. हिमालय स्टेज वेयर इट इज, प्लेटू स्टेज वेयर इट इज, बट इंडिया वाज डिवाइडेड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान. ये सब क्रिएट हुआ है नहीं हुआ? ट्रू और नॉट? ये इसका एग्जांपल है. तो यहाँ ये नहीं कि एनसीईआरटी वाला चिप रहे. That's why what you had tell us in foundation approach towards question. That's what I'm saying. ये ओरिजिनल बच्चा, इसको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? She was top 20 ranks. Top 22 है या 18 है, I don't remember. बहुत टाइम हो गया इसको. So I met her. She called me after 3-4 years. ठीक है. कर्नाटका में she started poor children. She started a free coaching program for them. बहुत ही मतलब she was in Bidar at that time, one of the most backward of backward districts. और सब कुछ उसने किया. And then she said, sir, you been my teacher, sir, आप प्लीज आ जाइए. बहुत पेमेंट वगैरह हम इसका नहीं कर सकते सर, बच्चों के लिए कर रहे हैं. ठीक है. So amazing work happening. Sir, her name, अब नाम ना लें तो ठीक है, because
let's keep that confidentiality of that person. But I'm just saying, like that's how they work. So वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी दे सकते हैं बिल्कुल। अभिषेक अभी का दे सकते हो, यू कैन डू इवन अभी का। द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप has changed, though the geography remains the same. First there was USSR, there was Cold War, and then post Cold War अभी जो हो रहा है। So everyone, what am I doing right now? बड़ी देर से इसी स्लाइड पर हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। Yes or no? You want 300 plus, this will be needed. And this cannot happen if you are that kunji approach, mugging up the books and someone saying मेरे क्वेश्चन आंसर रट लो इससे पास हो जाते हैं। हजारों लोग उस वजह से फेल हो रहे हैं। जो 2-3 बच्चे जो पास हो रहे हैं वो हमसे भी पढ़ के जा चुके हैं। वी आर वेरी वेरी क्लियर। तो उनको पता है कि ये, अब जैसे ओमकांत है, सारी चीज उनको पता है, थिंकिंग लिंकिंग एवरीथिंग दे नो। अच्छा इस कोचिंग से ये कुछ एग्जांपल मिल गया तो उसने वहां से भी उठा लिया। यस नो? So they will pick up anywhere and everywhere. A smart student would do that or not? आज एक बात बताइए, if Russia has to find creative solutions, can it come only through its advice of its friends or through advice of everyone? So smart students who are into creative answers, वो सबके inputs लेते हैं, but they understand who is the right mentor. कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, who is really partnering with me, जिसके साथ मैं ये है कि हाँ I can give myself the best whatever my strength and weaknesses are. I'll accept कि हाँ भाई ये ठीक है सर, कोई बात नहीं, और आप सर इस चीज पे डांट भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, I know that is there, I was very wrong on that. So imagine मैंने GS में क्वेश्चन डाला कि होमवर्क दिया था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉलिंग ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द स्टूडेंट राइट्स द आंसर इंडस एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो इंडस। आई सेड यार हाउ कैन यू बी सो नॉन सीरियस यार। वो स्टूडेंट ने आना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज आई सेड कि भाई इंडस को ईस्ट में दिखा रहे हो, आर यू सीरियस अबाउट इट। टीचर ने मुझे बोल दिया मैं सीरियस नहीं हूँ। अरे बेटा सीरियस नहीं, ब्लंडर और ब्लंडर नहीं बोला था मैंने वहां पर। अब यहाँ पे अगर ऑनलाइन में इसे ब्लंडर, मेरी इज्जत, ये भी नहीं पता कि नाम तनुज है, अंदर तनुज है या तनु बैठी है, नोबडी नोज। इज्जत का क्या करोगे तुम? तो ऐसे बोल रहे पुतिन की इज्जत हो। डिड यू नॉट थिंक ऑफ योर इज्जत व्हेन यू सेड इंडस इज फॉलिंग ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर? कहां देख के भैया, और क्या इसमें इज्जत तुमको पुतिन की जगह बिठा दे? अरे यार कोई टीचर ना ऐसे बोल रहा है भैया, आई एम तो जस्ट होल्डिंग यू टू अकाउंट यार। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू द सिलेबस, यू गेटिंग अप्रोच, सो दैट इज दैट। तो जितने भी लोग, किसी ने लिखा था मेरे पास सविंदर सिंह है, मैं फिर भूल गया नाम किसी का, और अगर आप अभी तक हो, मैंने बोल दिया मेरे पास माँ है, कहीं बुरा मान गए हो, तो मेरे पास है, और मेरे पास उसके चैप्टर भी है। तो अगर आप देखें तो चैप्टर 32, चैप्टर 33, चैप्टर 34, चैप्टर 36, ये सारे टॉपिक्स भी हैं। बट यू कैन सी ये कहां से शुरू होगा, 565 से शुरू हो, 465 से शुरू होगा और 565 तक जाएगा, 100 पेजेस आएंगे। डोंट रीड ऑल 100 पेजेस, यूज देम फॉर रेफरेंस। इसलिए लाऊं सैंपल के लिए। अब इंसुलेशन एंड हीट बजट, उसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, सिंपल जो आपको पता करना हो वो पता कर लो, ठीक है। आइसोथर्म्स के बारे में पता करना है, यहां से मिल जाएगा। अनदर गुड थिंग दैट द बुक कैन गिव यू इज रेलेवेंट मैप्स। मैप्स एंड डायग्राम्स दे सकता है बुक या नहीं दे सकता? देना चाहिए। So as I said, I hope you are getting my message loud and clear that these books are for reference. I will be telling you to refer. If you have these books, वहां से वो चैप्टर देख लीजिए। But must buy में क्या डाला, पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच, द एनसीईआरटी एंड द ज्योग्राफी मेड सिंपल पार्ट ऑफ इट। हो जाएगा, कैन आई एक्सपेक्ट दैट? खुशी ज्योग्राफी मेड सिंपल भी है, उससे मत बचना। क्लियर? एडवांस टॉपिक में, अच्छा वो तो 100 पेज थे, उसके आगे एडवांस टॉपिक भी तो आएगा। क्लासिफिकेशन, कॉपन का, थॉर्नवाइट का, ट्रुवार्ता का, एंड ऑल दोस थिंग्स, साइक्लोन्स का, फ्रंटोजेनेसिस का। सो यूज देम। I have a request everyone. How many of you are science background? Write yes. And if you are not, write no. पोल करा ले, पोल कराते हैं, पोल एक मिनट रुकिए। सो कौन सा कराते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। इफ यू आर साइंस यू गो फॉर ट्रू, एंड इफ यू आर ह्यूमैनिटीज यू गो फॉर फॉल्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट? 45 सेकंड्स है, ट्रू और फॉल्स ले लेंगे। So everyone has taken. So 70% of the class is science student and 30% is non-science, which is a very normal thing. Geography बहुत से science student ये सोच के आते हैं कि ये तो सब science है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। Okay, so Raj, Ritika, Arman, Banna, Preeti, and if you were in evening, you're listening to me on recording also. So welcome. I want to tell you that science students are very low on writing. क्योंकि writing ज़्यादा था नहीं, ठीक है? Writing ज़्यादा था नहीं. More on derivation and numericals. Derivation and numerical. Mostly what do you know? LHS is equal to RHS. Your lifesaver has been this. True. And you have also not worked much on your language development. Okay. Now you tell me, everyone. School में चलते. Did we not get some concept, some words, 2-3 words होते थे और हम उसको expand कर लेते थे कि नहीं, expand into sentence of our own sentences. Yes or no?
Yes or no? अभी ऐसा हो चुका है बिकॉज ऑफ योर साइंस बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, अब ये भी नहीं होता है आपसे. यहां पर द कोचिंग फेलो कम्स एंड ही सेज मग अप माय आंसर एंड ही हिमसेल्फ इज लिंग्विस्टिकली चैलेंज. उनकी अपनी हिंदी अंग्रेजी कमजोर है, उन्होंने खुद काम नहीं किया. ट्रू. सो दिस इज द टेक्स्ट बुक. पहले बुक है, उसके बाद क्या था, की टर्म्स, उसके बाद हम क्या करते थे, सेंटेंसेस एंड आंसर्स. डिड वी यूज दैट और नॉट? खुशी सिंह से दैट्स व्हाई ऐसे सबसे टफ लगता है. द मोर द नंबर्स, 100 वर्ड्स ओके, 150 वर्ड्स ओके, 200 टेंशन हो गई, 600 और टेंशन हो गई, 900 और टेंशन हो गई. तो साइंस स्टूडेंट तो बेचारा वर्ड ही काउंट करता है. एंड व्हेन ही इज काउंटिंग वर्ड्स, will he or she get the idea that this is the house that I lived in Karnataka? The geography has remained same, but the history has changed. Creativity आ पाएगी? तनुज बोले सर 12th के बाद तो कभी लिखा ही नहीं. Creativity हटाइए. You are not even getting specificity. Specificity means answering what is asked. भाई जो आता है लिख दो. You write what you know, not what is asked. Yes sir. प्रियांशु सिंह बीटिंग अबाउट द बुश, जो भी है मतलब सही चीज नहीं. और उसी में मैं बोल रहा हूँ वो साइंटिस्ट ही है जो लिख रहा है. कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी थिंग्स इन लेमन लैंग्वेज? उस पे लिखा हुआ है एवरी आवर क्विज, क्वेश्चन पे सही आंसर दे. क्या है ये क्विज? क्या कोई मुझे बता सकता है लेमन लैंग्वेज में? कब पैदा हुआ भाई? पिछले पूरे साल तूने आंसर सबमिट किए. आई तो हैव रिकॉर्ड, नो आंसर सबमिटेड. उसमें भी लिखा है. उसका अगर मैं आपको आंसर शेयर करूं, उसमें लिखा है व्हाई आर यू राइटिंग दिस बेटा, दिस इज नॉट अस. मैंने चेक किया क्योंकि मोमेंट दैट क्वेश्चन वाज देयर ना, आई थॉट ऑफ आंसरिंग हिम. फिर मैंने देखा कौन है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो उसमें आ जाता है. सो आई लुक्ड एट हिज आंसर्स वेयर माय कमेंट्स आर देयर. लास्ट ईयर आई हैव गिवन हिम कमेंट, बेटा दिस इज नॉट अस, व्हाई आर यू राइटिंग दिस. So आज तक वही चल रहा है. Do you get that? So you might think that the teacher is enemy if he says, you know, you are wrong. I'm saying teacher is your best friend. He is your doctor. Last year उसको बताया था कि बेटा ये सही नहीं है, उसने उस पर कोई काम नहीं किया. आज भी ये पूछ रहा है क्या कोई मुझे लेमैन में बता सकता है कि ये क्विज का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हर घंटे तेरे को सही आंसर देना है. पहले ज्योग्राफी चल रहा है, फिर पॉलिटी आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा. पीटी 2020 के लिए है, 22 के लिए है, ऊपर लिखा भी हुआ निर्देश पढ़े. ये सुनो. तो अब मैं बताना चाहता हूँ, आई हैव अ रिक्वेस्ट. एक बात बताइए, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, स्पेशली 70% of this class is from science student, will you get the language? Will you get the sentences? Yes or no? आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं? बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ 300 प्लस की, ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं आकर आई गिव यू फेक प्रॉमिसेस, बच्चे अब आ गए हो मेरे पास, आशीर्वाद है, गुफा में आ गए हो, अब तुम्हारा उद्धार हो जाए. अरे यार, इट इज नॉट अबाउट दैट बच्चे. यू नीड लैंग्वेज, यू नीड फ्रैगमेंट्स. सो आई वाज टॉकिंग टू माय wife yesterday on phone because I am not in my hometown. I moved out for some reason. So I said, so how was the day? She said, pretty frustrating. Your son is so frustrating, yaar. He was supposed to do some reading comprehension. Reading comprehension on some, you know, like culture in India. Okay, so some Chola art and architecture, something was given to. He's in 7th standard. And yaar, isko answer nahi likhna aata. Kuch bhi likh raha hai. The question was fill in the blank. The question was fill in the blank. Instead of fill in the blanks, he has written 4 lines. And 4 lines का कोई मतलब ही नहीं है. I'm talking about my son. I hope you are okay with that. तुम्हारा कुछ बोल देंगे तो तुम वो बोल दो. So the question was fill in the blank. My son, instead of in reading comprehension, instead of just writing the blank, he wrote 4 sentences. So my wife asked, why did you write these 4 sentences? He said, now I'm in 7th standard. How can they give me marks only on a blank? इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा. So first of all, she said, fill in the blank means fill in the blank. Whichever class you are, does not matter. ठीक है? तो बता दिया. Second thing is, what are these? ये क्या लिखा तूने रामायण? What is this? He said, whatever thoughts came to my mind. She said, बंद करो इसको. And she gave him a golden rule. Now tell me how many of you remember this golden rule? कितने लोगों को ये अपने स्कूल का गोल्डन रूल याद है? She said, even if you do not know the answer up to standard 7th, वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज कर दो. पैराफ्रेज, rewrite the parts of the question that the author wants to say. उसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं. Some marks are always given for that. Yes or no? My wife giving that advice to my son. He's in 7th standard. We can train him. You are in your 20s. You are graduates. आपको बोल रहा हूँ कि सविंद्र सिंह या कोई भी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज, सेंटेंसेस, पैराफ्रेजिंग में मदद करेगा. सर्वेश्वर सिंह मैंने भी कई बार किया. सर्वेश्वर भी डू दैट, मीडियम इररिस्पेक्टिव, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, करते कि नहीं? कुछ तो करते हैं. तो शी सेड, बेटा वो तो लिख, तूने तो कवि की कल्पना कुछ भी लिख दिया. My son, he is in the training stage. We are telling him so many things. We are sharing our own techniques. Yes or no? So I was happy, you know, like she was there. She said, ये तो रूल मान के चल लो, 10 में से 2-3 नंबर तो उसी का देता है वो एग्जामिनर. Does it happen or not? 2-3 नंबर देता है. That rule applies बच्चों even till today. That you have to paraphrase the question and then attach the relevant content for a UPSC answer. हाँ, उसमें सिर्फ हवाबाजी करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा. Relevant content has to be written and for that the teacher is there, for that the textbook is there. But अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर एक तो यहाँ पे बुक में था, बुक में से की टर्म्स निकालने में टीचर may not have got all the key terms. Now he expanded it in his own sentence. Teacher himself has wrong English and then you are copying it. Your own English and language is weak. तो आप बताइए कितना एरर हो जाएगा? बात क्या हुई थी शुरू और पहुंची कहां पर? Everything will be destroyed. So that is what we are talking about. Is everyone okay? So please, I would expect you to do that also. So अपने मेन बुक से किस लिए पढ़ रहे हैं? रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं.
रेफरेंस प्लस लैंग्वेज, ये मैंने फाउंडेशन में नहीं दिखाया था आपको, फाउंडेशन वाज अ डिफरेंट लेवल. Now let us look at some of the questions. Explain the role of evaporation in hydrological cycle. You can see that hydrological cycle was in syllabus. So nobody is going to ask you a question, write a short note on hydrological cycle. ऐसा कभी नहीं आएगा. It will never come. They will always think and link one component of it. इसको बताइए जो जल चक्र है उसमें क्या भूमिका है. What is the role of evaporation in hydrological cycle? अच्छा, differentiate between insolation and temperature. Insolation क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन से जो आ रहा है, सौर ताप जितना भी आ रहा है, और टेम्परेचर क्या, ताप, टेम्परेचर एंड ऑल, उसमें डिफरेंस बताइए. ये तो बहुत इजी है सर, दिस इज वेरी इजी. बट व्हाट इज एनामोलस टेम्परेचर? अब ये टेक्निकल वर्ड आ गया. व्हाट इज एनामोलस टेम्परेचर? यस, सो एनामोलस कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड एनोमली. एनोमली मींस सम डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड. ट्रू और नॉट? कैन आई से Putin's decision to attack Ukraine is an anomalous behavior for a superpower nuclear power. Expected नहीं था, anomalous है. True or not? So that is anomaly. तो किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है. टेम्परेचर का anomalous मतलब you were expecting the temperature to be this, but वो ज्यादा हो गया, कम हो गया. So that is what anomalous temperature. So कई बार होता है summers expected से ज्यादा हो जाती है. So what will you say? Positive anomaly. कई बार summers जो है expected से ठंडी है, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही. Negative anomaly. Why does it happen? Where all it can happen? ये concept है भाई. यहाँ proper concept लगेगा. For that I have to teach you all. That is why you need the teacher. Describe the origin. कैसे होता है और development of a thunderstorm with example. अभी एक बात बताओ, एग्जाम्पल में तो यहाँ पे कुछ तो मेमोरी भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इवन करंट अफेयर्स से हो सकता है. करंट में आपने देखा यहाँ पर बहुत सारा थंडरस्टॉर्म, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. बिग साइक्लोन हैपन था, इसकी वजह से इतनी डेथ हो गई यहाँ पर, दैट कैन बी देयर. अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जब ये एग्जाम्पल आता है ना एंड यू वांट मोर मार्क्स, दो दिस ऑल इज फिजिकल ज्योग्राफी, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इट, थिंक एंड लिंक करके, यस नो, थिंक एंड लिंक करके. सो इफ आई से दैट बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, human beings have caused the city temperatures to be higher and the water does not percolate down, the water evaporates. Both these processes have caused the development of severe thunderstorms suddenly and abruptly in cities in tropical areas. अब मैंने क्या कर दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्ट करके. डू यू गेट दैट? Normally तो it would have been a science process, no? So most of you are science student. अच्छा, science में I know, okay, this happens, evaporation happens, this equation, that equation, LHS is equal to RHS. You get marks. But for good marks, what I'm saying, that everything explained. Now let us understand what is human being doing. It is because of human being, and I want to tell you, because of thunderstorms, so many deaths are happening in India. चीजें बदल गई कि नहीं बदल गई? That is thinking and linking. That is where the answer writing will come. Lecture plan क्या होगा? So कल के लिए सबको बता दिया, कल का lecture plan. What am I going to teach? So आपको class से पहले बता दिया जाएगा what is going to be coming in the class. So tomorrow we are going to talk about atmosphere and weather. What are we going to talk about? There are 5 things which I will talk. I will require 2.5 hours for that. 30 minutes each. Meaning and scope of climatology, origin of atmosphere, composition of atmosphere, structure of atmosphere. Yes, Dushyant, thank you for correcting me. 7th March. कल तो छुट्टी है ना, संडे को. 7th March. What should you do in the meanwhile? Class 11th NCERT chapter 8, composition and structure, and come with your doubts. कोई doubts है वो भी लेकर आओ. And doubts, people who have done foundation, write down whatever you understood, what not. Take a snapshot, put it over here. Raise hand, I will answer that. Geography made simple. Chapter 10, atmosphere and its energy. Clear? Chapter बता दिया. And people who have done the books with me, GC Leong, you know the power it gives you. अगर एक चैप्टर टीचर पहले बता देता है, does it make sense? आपके पास संडे करके आ जाइए, एक चैप्टर देना, and you know how long these chapters are. So I haven't seen foundation yet, but the process reading GC Leong as well, क्या लिखा है? But will the process of reading GC Leong help in reading other GS books? Yes, प्रकाश, आप process देखेंगे तब ना, और देखने से होगा भी नहीं प्रकाश. All these students who were there when I told them about the process, they were like, okay, देखते हैं, they trusted me. I just want to tell you that I am on your side here. I am not against you. Even if I say your answer is wrong, bhai, I am on your side. Now I'm supposed to. That's my role. I'm not a villain over here. अगर कुछ मेरे को evaluator बनाओगे, if you make me an evaluator, can I say that in my evaluation your answer is below par? ये तो मुझे करना पड़ेगा. So I am on your side, but as I said, most students who were there, I said पहले करके देखो. When they did this, they realized it. So do we have to buy Geography Made Simple book? ये देखो, बंदना अचानक आंखें खुली हैं. सर रुपा पब्लिकेशन बुक नहीं है, उसका आने में 4-5 खुशी कब से कह रहा हूँ ये पढ़कर आना है पहले से आफ्टर लेक्चर. संडे पहले पढ़ के तो आपको बता दिया ना, पहले बता दूंगा ना, दोनों लेक्चर का दे रहा हूँ. वंदना, ये देखो क्या लिखा हुआ इस पे, मस्त भाई, ठीक है. सर किताब नहीं है सर, आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस. अरे इफ आई से द वॉर मस्ट एंड, ये थोड़ी कि कल ही हो जाएगा. ऑर्डर तो कर दो, ऑर्डर कर दो. यस, टुडे इज फ्राइडे, मंडे तक आ जाएगा, ट्यूसडे तक आ जाएगा. यस, वी विल हैव डायग्राम बुक आल्सो, बता देंगे अभी शुरू तो हो जाए. वी विल हैव डायग्राम बुक आल्सो, प्रोजेक्ट बुक आल्सो, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इन दिस. सर पीडीएफ अवेलेबल है तब तक वो चला लें. हाँ बिल्कुल, यू हैव शिवांगी, यू हैव, प्लीज डू दैट. सर सविंदर सिंह के रेफरेंस ऑफ टॉपिक्स आफ्टर लेक्चर आप इंडिकेट करोगे या फिर हमें अपने हिसाब से? प्रियांशु, आई सेड इट इज अ रेफरेंस थिंग, इट इज अ रेफरेंस थिंग फ्रॉम माय साइड, ये होना चाहिए.
रविंद्र सिंह इज रेफरेंस थिंग, आप अपना उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब टॉपिक उठाइए, ठीक है। आज सचिन सर ने मुझे बताया, कौन सा बताया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कन्वेक्शन बताया सर ने। सो लेट मी रीड इट, पेज नंबर 485, बस वहीं से एक पैरा पढ़ूंगा जो भी कहता है, इसलिए बोल दिया यहाँ से रेफरेंस है, दिस इज रेफरेंस एंड दोज आर टू बी रेड इन डिटेल। इज एवरीवन ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम आ चुका है, तो यहाँ तक इज एवरीवन ओके? द बुक इज आल्सो देयर, इफ यू डोंट हैव द बुक अरेंज कर लीजिए, आ जाएगी। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड उस पे काम करिए और मेरे साथ चैप्टर बाय चैप्टर। दिस इज ऑन 7th मार्च। 8th मार्च को क्या कराएंगे? नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9 आ जाएगा एनसीईआरटी का, और इसका क्या आ गया, चैप्टर 11 भी आ गया एनसीईआरटी का, और इसका भी चैप्टर 11। यू कैन सी इवन एनसीईआरटी एंड जीसीबी हम चैप्टर नंबर्स तक मैच कर रहे हैं। इट इज दैट ओनली, डू वी गेट दैट? संध्या सिंह डीआर खुल्लर लेनी है, बाकी भी रेफरेंसेस संध्या अभी जो मस्ट बाय बताया वो है। What you don't have right now, no need for that. But in time, I said, एक reference रखना will help you. As I said, it will not only give you language, you will get the diagrams also. तो सविंद्र सिंह और डी खुल्लर ये दो तो रख लो, ठीक है? प्लीज प्लीज डू दैट। बाकी किसी ने ग्रुप पे पीडीएफ तो शेयर किए हुए, सविंद्र सिंह एंड खुल्लर तो आई थिंक ग्रुप पे ही, टेलीग्राम चैनल पे ही हो गए थे। सर हिंदी मीडियम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े क्यों? उर्मी, why would you not take सविंद्र सिंह is available in Hindi? You have सविंद्र सिंह available in Hindi, आप तो करेंगे ना। आप मजे से सर हिंदी मीडियम सिर्फ एनसीईआरटी करे तो क्या हिंदी मीडियम के लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा एग्जाम में? Is everyone okay? So 8th मार्च का भी आपको क्लियर है। Heat budget, moisture and humidity at adiabatic processes, now technical area, atmospheric stability will come over here, and the books are also there. And as I said, मैं थोड़ा home assignment भी देता हूँ। I don't know, some of you might feel अरे homework भी देता है यार, तो people who have done the homework वो भी आया होगा, वो भी लिखा हुआ होगा पहले ही कौन सा होगा। In foundation, we had a tick mark वाला system. Either your lectures will be planned, they will be given to you like this. Is everyone okay? PDFs कहाँ डलेंगे मटेरियल के? कोर्स का अपडेट सेक्शन में डलेगा। ऑन द कोर्स अपडेट सेक्शन हम ऐसे चलेंगे, तो कोर्स अपडेट में एलिमेंट क्या होते हैं, मीटरोलॉजी क्या होता है, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी चीजें वन बाय वन वी विल बी डूइंग और उनका मटेरियल आ जाएगा। लेक्चर प्लान आज को सबको समझ में आ गया। टाइमिंग ऑफ द क्लास 11:30 to 2 PM। एसोसिएटेड सेल्फ स्टडी समझ में आ गई? ओके, आंसर राइटिंग बता दिया है, विल हैपन इन द कोर्स। सिलेबस कंप्लीशन कब तक होगा? तो यू हैव द होल लेक्चर प्लान विद यू। कहां पे मिलेगा? कोर्स पेज पे जाएंगे, प्लीज फॉलो। बहुत सारी चीजें कम्युनिटी सेक्शन पर आएगा, तो कोर्स पेज प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल। सर नोट्स पीडीएफ में होंगे या हैंडआउट? संजय मोस्टली पीडीएफ में होंगे, कुछ हैंडआउट होगा तो भी वो भी पीडीएफ में ही आएगा। दे विल बी पीडीएफ, ये सब। एंड आई विल मेक यू डू सम प्रोजेक्ट्स जिसमें आप अपने हाथ से खुद करेंगे संजय, जस्ट लाइक यू यूज्ड टू डू इन योर स्कूल एंड कॉलेज। नो, दैट वर्क विल बी देयर, वो सब कराया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, स्लाइड ही बनेंगे, पीडीएफ विल बी देयर, दैट विल हैपन। So on the first day, I wanted to introduce to you what is geography, what is my approach, how is the course going to go. This is paper 1. Yes, paper 1 को हम फिनिश कर रहे हैं May 20th तक हम उसे खत्म कर देंगे। जो भी कहता है जून में फिर प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स ब्रेक आ रहा है, उसके बाद probably June 15th के आसपास we will start paper 2. That is the idea for all the students. You can plan that. Whatever books I need, I told you, this is going to be my approach. You can ask me questions also, and I'm going to, and people who have attended my previous class, they know I go strictly by syllabus also, and I make you do a lot of work. So आपको अपना काम करना होगा। It will not just be कि slides read कर रहे हैं, जो भी आज आपने देखा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बस हाँ ये है कि उसमें concepts and topics will come, they will be technical, there will be some dictations also, no doubt happening, and there will be some targets also. 5 minutes all for you now towards the end of the class. तो किसी ने कहा था सर आगे क्या पढ़ना है, उसका होमवर्क भी बता दीजिएगा, वो भी बता दिया। 7th और 8th मार्च का बहुत ही क्लियर है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। और कुछ सीक्वेंस जानना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूं एवरीवन। एक और चीज बताना चाहता हूं टुवर्ड्स द एंड, लेट मी ऐड दिस आल्सो। आवर सीक्वेंस इज गोइंग टू गो लाइक दिस: क्लाइमेटोलॉजी 6 lectures, geomorphology 6 lectures, then oceanography 6 lectures, then we have bio and environment, or maybe somewhere here इधर हमने क्या रखा है, advanced climatology, advanced geomorphology, advanced oceanography. Sometimes it happens that if we take climatology all 11 lectures in one go, the student is not in a position to digest all. So हम क्या करते हैं, 6 lectures के बाद you have understood the basic concepts, so we keep a gap. जो आगे के जो टफर कॉन्सेप्ट्स है उसी में, तो आप प्लानर देखेंगे आज, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द प्लानर। मेरे पास वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए प्रोफाइल बना के रखा है उसमें सारा, इफ यू सी द लेक्चर प्लान फॉर मी, तो आई हैव रिटन इट डाउन, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। तो मेरे पास जो लेक्चर प्लानर है, इन फाउंडेशन यू टोल्ड अस अबाउट नोटबुक्स, मैप बुक, हाँ वो सब आएगा बेटा। मैप बुक इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, पेपर 2 में आएगा ज्यादा। सो योर क्लाइमेटोलॉजी विल कंटिन्यू टिल 12th of March, 6 lectures. After that geomorphology 6 lectures, oceanography 6 lectures. तीनों हो गए। अब तीनों आपको लैंड, एयर एंड वाटर, नाउ यू आर अंडरस्टूड अबाउट दैट। देन व्हाट वी विल ब्रिंग इज, वी विल ब्रिंग एडवांस क्लाइमेटोलॉजी 3 lectures, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी 5 lectures एंड एडवांस ओशनोग्राफी 3 lectures. तो थोड़ा प्लानर में देखिएगा, हर चीज में बेसिक भी रखा गया, एडवांस भी रखा गया, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव ज्योग्राफी एज अ बैकग्राउंड. My experience in 17 years tell me very clear that most people opt for geography not from their own discipline. ये एक borrowed discipline.
अगर सीधा आ गए 11-12 क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करा के मेरी तरफ से खत्म है भाई सिलेबस हो गया, नहीं नहीं, it has to be you've understood it, you've understood the climate also, you've understood the ocean also, basics are done, and basic does not mean foundation वाला syllabus में you could see that in the syllabus also we have easier ones and difficult ones. तो हम क्या करेंगे, in the first 6 lectures we will finish up to this atmospheric stability तक खत्म कर, ये कहां पर हो गया, first 6 lectures ये खत्म हो जाए, और probably ये भी ले लेंगे एयर मास साइक्लोन तक ले लेंगे, और कुछ जो चैलेंजिंग टॉपिक्स है वो फिर आगे लेकर आएंगे. So that is my design in my 17 years. I have realized कि what works with the student. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारे challenges आएंगे. I'm not expecting you to be superhuman, but at the same time, please do not show off that you are superhuman. जो possible है, be humble, be honest. History may change, geography need not. So let this course be a history changing for you in your life. So with this note, I would want to welcome you all to this course. We will start from Monday. If you have people looking for geography optional, उनको प्लीज रेकमेंड कर दें, एक बार वो ये फाउंडेशन देखें, कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट आज का है, इसको जरूर देख लिया आपने. एक मैंने लिंक लगाया हुआ है, कैन यू सी ऑन द टॉप ऑफ कमेंट देयर इज अ लिंक, व्हाट इज दैट लिंक, लिंक फॉर जो फाउंडेशन का कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट है, वो काफी चीजें आपको बता देगा. मनीष इज सर आई हैव सीन योर ओल्ड बैच लेक्चर्स, मेरा टारगेट 2020 है, तो क्या वी कंटिन्यू रखूं या फिर ये लेक्चर अटेंड करूं, फिजिकल के 22 लेक्चर देखिए. So Manish, whatever you have seen, if there is a problem in that, you attend that because you are targeting 2022. I would want you to focus on your prelim preparation also. ठीक है, क्योंकि आप देख चुके हैं, अगर आपने नहीं किया होता तब अलग बात थी. So फिजिकल में जहाँ पे डाउट है वो आप देख लीजिए, बट फिजिकल के बाद जब ह्यूमन शुरू होगी then you can look at that. So टॉपिक के लेक्चर प्लान से आपको पता चल जाएगा. Preeti saying I've attended your class for the first time, found it amazing. So Preeti, you're most welcome, but I have a strong advice. All the students who did not do foundation, please do that. At least उसके 4 lectures, आज 2 देख लीजिए, 2 कल देख लीजिए. At least do that today and tomorrow. It will help you a lot, Preeti. ठीक है? And you're most welcome to the course. So can you suggest something about I see your some lecture foundation, but I saw recording because I make notes along with class and not able to do live because while interacting I miss some main points. प्रियांशु बच्चे जब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, I have a request, at least the sentences should make some sense ना. आपका भी effort waste हो जाता है and I'm also not able to help you. So Telegram group and this thing, please do that and you can think over, come with your doubts. Your first 5 minutes of the class are for your doubt. अपने क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रेम करें, व्हाट डू यू वांट एंड आई विल गिव यू स्पेसिफिक आंसर्स टू दैट. ठीक है, तो प्रियांशु अपने डाउट्स को कलेक्ट करें, थोड़ा फाउंडेशन देख लें एंड नोट मेकिंग, एज आई सेड मेनी थिंग्स विल कम इन बिटवीन, सो दैट विल बी देयर. Mega says it will be 100% partnership. Thanks a lot Mega, it is very encouraging that my students are also going to give their best. इसे हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के ही मानेंगे, ऐसा ना. हाँ प्रियांशु, नेक्स्ट टाइम में आप बिल्कुल क्लास के शुरुआत में अपना क्वेश्चन रेडी रखना, पहले पोस्ट कर देना प्रॉपर्ली एंड आई विल डू दैट. सो इनवाइटिंग एवरीवन 100%